Hello, everyone, and welcome to this session for your RBI Grade B Phase 2 Descriptive English part. So, guys, I welcome you all in this session, and I hope that your preparations are on track and everything is going well. Good morning, Surbi. Hello, Sandeepan. Hello, Gautam. Hello, Ardra. Hello, Vinci. Hello, Karan. Hello, Saurabh. So, guys, I wish you all the very best. Before we begin, let's wait for a couple of minutes. Let everyone join in, and then we shall begin with the session. So how are the preparations coming along, guys? I hope everything is on track. Rashmi has a query. Sir, do we use American English, UK English, or British English? I mean, sorry, American English or British English? So formally, Rashmi, we use British English. So we use the spellings that we were taught as a kid, COLOUR, in organization or in such words. We don't use Z, we use S. Right. So good morning, Akhil. So got it. And yes, marks will be deducted for wrong spelling errors. So please make sure that you do not make them. Okay. Good morning, Barsha. So guys, this is the first session of your live descriptive English session, descriptive English part. And in this session, we will be discussing essay writing. So guys, if you have any doubts, if you have any queries, please feel free to ask me right now. Guys, if there is any doubt in your head, please feel free to ask me. I'll be more than happy to help you out here. Yes, guys, is there any doubt, any confusion that you may have before we begin with the session? Guys, any doubt regarding descriptive English or anything else that you may want to know, please feel free to ask. Otherwise, then we shall begin with the session. Organization likha to marks. Yes, Saurabh, because in India we formally follow British English, not American English. Got it, Saurabh? So yes, marks will be deducted for wrong spellings. Good morning, Aditya. All right, so this is the first class for your live crash course, and guys, we will be this is the only class which will be streamed on YouTube live for the aspirants to get to know that how do we conduct these classes and what will be taught in such sessions. So this is the only class that will be live streamed on YouTube. Rest of the sessions will only be available to students who are enrolled in our crash course, right? Do we have in essay, Sandeepan? See, the word limit that is given to you in your essay, Sandeepan, is the minimum word limit, right? If they've given you 350, then that is the minimum word limit. But surprisingly, last year, what we saw was the word limit that was given was 600 words. So, and the reason for that, Sandeepan, was because students started questioning this when the word limit is given 350, and if we target only 350, then why are we not getting ample marks, ample score? So, the psychology was that this is the bare minimum limit. But when students started asking questions that why are we not getting, good marks if we write 350 word essay? The reason for that was they were not able to do justice to their essays. In 350 words, I think, there is not enough that we can put in the content part. So that is why they gave a word limit of 600 words last year, and this is what they wanted to see. Okay, in 600 words, let's see how many you can write. So I always feel that 400 words is the right word limit, because that is practically feasible in the exam, looking at the time limit that you have, because you have 3 questions to complete, guys. It's not just essay that you have to write brilliantly. Your précis should also be excellent, and your reading comprehension answers, that's the biggest part of your paper, 40 marks, that should also be elaborated, right? So for elaboration, you need time.
And that is the reason, they're giving you an open word limit like 600 words. You can write around 400, 420, 430, but considering the time management in, for the other two questions, Sandeepan. So I always feel you should always target 400 words in this paper. That is practically feasible. You'll be able to discuss the whole topic in the right context, right? And you will have ample time to complete the other questions as well. So that is the point here, Sandeepan, right? Nothing comes to mind, Jyoti. Rest. That's true. That's what we will discuss today. कि कैसे शुरू करना है उसको? I'll tell you how to start with this, and you will always have something to start with. How willing are answers checked manually or computer? So Aditi, it's basically done both ways. It is evaluated manually as well as through software as well. First it is evaluated through software like a Grammarly, sort of a Grammarly based software, which will classify, which will basically tell the evaluator your mistakes. How many mistakes you have made? Are they grammatical mistakes or punctuation errors, or are they typos? What they are? So first, your paper will be evaluated through a software which will tell the evaluator that these are the mistakes that you have made, right? So that he doesn't have to waste time to, or put in time to find out the errors in the center in your answers. Then it will be evaluated manually at the end. So that the content is evaluated later on. So first, your paper is evaluated for mistakes through a software. Then it is manually evaluated for your content part. Aditi, I hope I'm clear. Got it, Sandeep? And I know it's impossible to write 600 words and then complete the whole paper in time. So that is why I always say 400 words is the ideal word limit, Sandeep. RC word limit, we'll discuss that in these sessions, Aditi. But there's a very simple formula in reading comprehension. For 1 mark, you have to write 10 words. So if let's say there are 5 questions for 40 marks, so if we divide it for 5 questions for 40 marks, that means every question is for 8 marks, right? So for an 8-mark answer, you have to write at least 80 to 90 words. So 10 words for 1 mark. That is the rule for reading comprehension. You don't get time separately, Utkarsh. There is an aggregate time that is 90 minutes, and you have to decide how much time you invest into into a particular question. So you'll be given 90 minutes. You have to decide if you spend 30 minutes or 25 minutes or 35 minutes in essay, then how much time you invest in the other questions, Utkarsh. Typing speed is not an issue, Rajesh. If you just practice daily, right? If you just practice typing daily, you will be able to complete the paper in time. I'll show you and I'll tell you in the session how and why. No, no, Prasad, I'll be discussing that in the session itself. Don't worry. I'll be discussing the previous year questions in this session itself, and I'll be telling you everything that there is to understand, to know about essay writing. Good morning, Mehak. Welcome to the session. See, it's not exactly Grammarly, Sandeepan. They have their own software where they only look for grammatical mistakes and spelling errors and typos. They don't look for improvements. Improvements is, it is evaluated manually. So no, they do accept in order to, but they have to be written separately. For example, at least we are in a habit of writing at least together, right? But at least is written separately, at is written separately, least is written separately. So these things we have to get to know, Sandeepan, by typing, with the habit of typing. So it's not the same software. They have their own software for that. Names, what sort of names, Jyoti? All right, so let's begin with the session. Kindly elaborate if you want to discuss this. Okay, so chalo guys, I'll be sharing my screen with you. I think everyone is here. So let's begin with the session. Now, names of people are perfectly, they're accepted, Jyoti. Names of people like Narendra Modi or Sitaraman, or let's say if you say Dr. APJ Abdul Kalam, they will be accepted. So nothing wrong there. So name of countries, name of people, they're accepted, but don't overdo it, right? Don't just focus on political names. That's my suggestion to you. Instead, focus on facts and data, right? So don't bother about, what are you, whom are you referring to for this? So just write finance minister instead of writing, Sitaraman. Instead of writing Narendra Modi, write the prime minister, right? So that is a better approach here. We have to work for this. Now, guys, the students are asking me, sir, there are many mistakes that we make, like articles and all that. So we will have to fight it out, guys. That is what we have to do.
So articles have to be taken care of, Rishabh, because everything, every mistake, every minute mistake, guys, please understand, not just your grammar or not just your spelling errors, but your punctuation errors will also come into play in this paper. So you also need to learn the punctuation, right? Yes, we have provided you fodder material in your course, Utkarsh. In this course itself, where we'll be providing you fodder material for data and stats, not quotations. Utkarsh, quotations are not required in this paper, right? We basically, sustain on, or we basically focus on facts, data, statistics, reports, and schemes. These 5 things will be provided to you, Utkarsh, right? So, guys, is my screen visible to you? Kindly give me a thumbs up if it is. Yes, Vinci. Thank you. Hello, Manu. And guys, please turn on your cameras. Guys, I would love to see you. There's no point teaching a blank screen here. I hope you understand. There's nothing else. If you can, please turn on your cameras. I would love to see you. See, hi, Jayant. Good morning, dear. So looking fresh, looking sharp, ready for phase 2, I think. Good morning, Udit. How are you, dear? लग रहे हो रात से ही पढ़ रहे हो उदित तो, है ना? लॉन्ग सेशन चल रहे हैं उदित के. Utkarsh, good to see you, dear. Sandeepan, how are you? I think I'm seeing you for the first time, Sandeepan. I think I've replied to a lot many queries by you in the discussion forum, right? But I think this is the first time I'm seeing you. So good to see you. Hello, Amit. Good morning, dear. Tension नहीं लेने का अमित, ठीक है? बिंदास रहने का. It's not कि बहुत मुश्किल नहीं होता पेपर. Honestly speaking, if you just go prepared, everything comes. Everything seems easy to you. Good morning, Monica. Hello, Mehak. So, guys. All right. So, abhi koi questions hai, doubts hai, to please ask me in the middle. Otherwise, let's keep the session. I'll try to cover each and everything, right? And I'll try to highlight everything that you can think of, right? And if there is something that you still have in your mind, you can always ask me. Okay. So, guys, turn on your cameras. I would love to see you. I would love to have you here. Right. Good morning, Udit. Chalo. Vinci, ready for phase 2? Why are you here, Mansukh? If you're a paid student, you should have joined the crash course class through the Zoom session. Agenda, Monica will be discussing right now. Good morning, Mansukh. Today's session, Monica, is for the live crash course students who have enrolled with us and will be, going into the details of essay writing in this session. Learning something more and something helpful so that we can execute our essays better, right? Accent, Mahek, accent की तो problem ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, because accent तो उसमें I think interview में काम आता है, if I'm not wrong, right? So don't worry about accent. क्या सर American accent होना चाहिए या अच्छा एक्सेंट तो बोलने में होता है. अच्छा स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स आई टोल्ड यू, आई थिंक आप अभी शायद लेट आए थोड़ा सा, मैं आई वाज डिस्कसिंग दिस अर्लियर दैट वी गाइस प्लीज रिमेंबर वी फॉर्मली फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश. So we have to use the British spellings of words. So instead of writing labor, LABOR, we have to write LABOUR. Similarly, COLOUR, color. Similarly, for many words like organization, right? We in American English we use Z, but in British English we have to use S. So follow British English in this paper, not American English, guys. This is for everyone. Good morning, Neeraj. So my name is Narveer, by the way, not Navreen, but अच्छा नाम है Navreen भी. I'll take it. So good morning, Neeraj. And how are the preparations coming along, Neeraj? For the past some time, I think you've been preparing, you've been giving your best. So let's make that, let's make those efforts count. Let's utilize our time and let's give it our best this time, and let's come out with flying colors, Neeraj. ठीक है, आपके बार इंटरव्यू तक तो जाना ही जाना है, नीरज हमने. That should be our aim, right? So chalo guys, let's begin with the session. Let's not waste any more time. So first of all, guys, those students who are watching this session on YouTube, guys, we have launched 2 courses, live course, live crash course and test series. Now in live crash course, we are conducting live classes for your all your modules, guys. It'll just take 2 minutes, right? So we are running live classes for all your modules, ESI, FM, objective, as well as descriptive, and along with descriptive English part. Then there are short notes, mind maps, current affairs in your courses. Test series along with evaluation of test is there, and that is the best part that you can take in right now, because this test series will give you a lot of insight into how you are going to fare with your answers. Jayant, कभी आप mock test लेके देखोगे ना, तो you will realize कि सर वो interface ना बड़ा challenging होता है.
तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप क्या पढ़ के जा रहे हो, इट्स मोर अबाउट आप क्या वहां पे जो आप पढ़ के जा रहे हो क्या आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, right? And executing on the interface is the real game here. So what I mean here is जो interface है ना guys, that is very very challenging. उसमें एक dialog box होता है, and in the dialog box you'll have to write your answers, and dialog box it keeps on shifting towards right, and even below under the given boundary. So you have to scroll a lot of left to right, top to bottom to review your answers. So make sure guys you are in a habit of writing properly without errors, because if you sit down at the end of your paper and if you try to rectify your mistakes, then it will take a lot of time. Because I've seen this problem with many of the aspirants. What happens is when they try to edit their answers, when they click on the line or the word they want to edit, the cursor shows to the very right or to the very left of the line, and then you have to press the arrow key to bring your cursor back to that word again, and then you can edit it. So if you are editing 5 6 7 words, you'll be doing it over and over again. So make sure that you get into the habit of rectifying your mistakes as you go along, and that is for the same reason, that is why we are providing you the test series. There are 5 full-length mock tests with evaluation and detailed feedback on the interface of the exam. So we have curated an interface on our website, on our on our interface. Um, um, and in that interface you will be able to write your answers the way you are going to write your answers in the actual exam, with the time stipulated manner and in the simulation of the actual paper. So you'll be able to take those 3 tests, paper 1, paper 2, paper 3, in one go, and you'll be able to understand how you feel when you sit for 180 minutes in one go, or more than that. I think there are 3 papers now, so if you sit more than that, how does it feel under pressure? So that is the the game, the key part here. So 79 marks scored once. Very good, Manu. Keep it up. 79 is the highest RBI has ever scored anyone in this paper, guys. Please understand. Descriptive English. I'm talking about descriptive English, right? There's no sectional cutoff, Nanda. There'll be aggregate cutoff in phase 2, and that will be combined with your interview score, Nanda. Okay, so guys, I was talking about the test series and the crash course. So the test series is very very useful, guys. This will really change your outlook towards your preparation. And there is also a standalone test series. Now the test series which has ESI objective test, ESI descriptive test for your practice, then FM and FM objective and descriptive test for your practice, then current affair tests are there, and then again 5 full-length mock tests with evaluation are provided to you. So you can choose any of these, either of these, and they'll prove very beneficial for your preparation out there. And today is the last day. We are offering flat 50% discount on these courses. So the link for these courses have been given in the description of the YouTube video. So this is not for the students who are here for the Zoom session, but only for the YouTube session, right? Overall good score for phase 2, Prasad. If you look at the previous year cutoffs, you'll find out what is a good score, right? So go check out the previous year cutoffs. There are separate cutoffs for descriptive English, separate cutoff for FM and ESI papers, and then the weightage is, I think, 2/3 for your FM and ESI paper and 1/3 for your descriptive English paper. So that is how it is calculated, and a safe cutoff you'll be able to find out on our website. So just go check that out. Okay. Chalo guys, so the agenda for this session. Let's start with the session now, guys. So first of all, I'll give you an overview of descriptive English part, right? What questions are there, and how much time should you allocate, and what is the weightage of these questions, and what is the time management and all that. Then I'll show you the previous year essay topics today. And in Prezi sessions, I'll show you the previous year Prezi. In RC session, I'll show you the previous year RC topics for the last 5 years, by the way. Right, so we'll discuss previous year questions. Then we'll start with the basic definition of an understanding of an essay, how to articulate an essay, how to draft an excellent essay, and to do it every time you are executing one. Right, then we'll go into the details of different types of essays that you can face in the exam. Then we'll start with how to draft an essay, what are the basics of essay writing. Then I'll also give you 10 very insightful tips for your essay writing, and they will definitely help you, not just for this exam, but for any exam out there, and even throughout your life. Whenever you'll be facing any exam,
be drafting anything in your life, these 10 tips will go a long way. This will help you and this will stay with you forever. I can guarantee you that, guys. Then I'll give you some important topics to start with and some homework as well today, so that you have something to do today, and then we'll discuss the homework tomorrow, and then I'll give you some sources to prepare for. So that's the agenda of this session. Yes, now please, guys, please remember this. That's a very good question, Sandeep, and this is for everyone, guys. Uh, So guys, please remember that when you are writing your essay, you do not have to write the topic of the essay again. You will be given 4 choices: number 1, number 2, number 3, number 4, right? So let's say you've chosen number 3. For example, you've chosen topic number 3. So what you do is, in your answer, when you're writing your essay, just write number 3, full stop, put a space, right, and then start with your essay. You don't have to write any title, you don't have to write anything else. But guys, if you forget to write the number of your choice of your essay, please remember your essay will not be evaluated. This is one big thing that I wanted to discuss. I would have discussed this with you tomorrow, but please remember this. We experienced this last year as well as the year before that, right? That when students forgot to write the choice of their essay, marks are deducted. The essay, I mean, not deducted, essay is not evaluated at the end. So if you score 40, 45 marks, 50 marks because you forgot to write your a number of your essay, you can understand that your essay was not evaluated. So you do not need to write the title or the essay again, but what you do need to write down is the number of your essay, the number of your choice of your essay. Is this clear to everyone, guys? Please give me a thumbs up if it is. Yeah, it's different with it. It's not the same. Some part must be same with it, but not every part. There are, we'll go into more details, more depth in this session. Exactly, Kaustubh. But in which year, Kaustubh? And I'm not sure if NABARD does that, but in RBI, I'm sure, they do this. Although the papers are evaluated by the same organization, IBPS, but I think RBI, I'm not sure about NABARD, but I'm sure about RBI. If you do not write your number of choice, right? For example, if you're writing your RC answers, if you do not write, this is answer for question number 1, question number 2, right? That answer will not be evaluated. Got it? So please make sure, guys, you do not forget to write down the number of choice, the choice number that you will be putting in there, right? All right, guys. So let's start with that. So guys, 2022 Kaustubh, yes, फिर NABARD में भी हुआ होगा, but I'm sure के RBI में this will definitely, this will cost you marks. So please do not forget to write. We'll be discussing each and everything, guys. I'll tell you that what is important and what to do, what not to do here. We'll discuss each and everything, every minute detail that you can think of. We'll discuss that in these sessions. So please keep your queries with you. If you have any query, I'm with you for the next 1 week. Every morning, 10 to 12, 10 to 1, I'll be there. I'll be helping you out with your descriptive English part. If you have any doubt, any query regarding anything else, please keep it with you. You can ask me whenever you want. Okay. So chalo guys, are you ready? Shall we begin with the session? Yes, Udit, Utkarsh, Vinci, Manu, ready guys? Show me thumbs up. Just show me thumbs up on the camera. I'll be able to, understand. Good. Right. Chalo guys. So let's begin. So first of all, guys, let's understand the overview of essay writing. So guys, generally what I have observed in the last 6 years, I've been doing this for the last 6 years. I've been teaching RBI, NABARD, SEBI, PFRDA, and many other descriptive English exams. And this I have felt, I don't know the reason behind it, but I have really felt it, that students usually do not focus too much on descriptive English. Because maybe maybe there could be n number of reasons. They feel that, okay, English, to kya hi hai, kar hi lenge na yaar, we'll be able to do it, right? It's not too big of a deal, right? Second, sometimes they feel, sir, FM and ESI is more important because that holds 2/3 of the weightage, right? And English is only 1/3. But as I always emphasize on this, guys, please remember, descriptive English is the game changer in this exam, and I'll prove to you how. Guys, I am sure Utkarsh, Udit, Vinci, I think you're giving everything for your FM and ESI paper. Am I right? You've already started preparing for your FM and ESI, and I know that.
right? Without you telling me. You've already started doing that, and you've already been doing that before phase one. So you always believe FM and ESI is the more, it has a lot of vast syllabus. English में तो क्या ही करना है, 3 क्वेश्चन है, एक ऐसे लिख देंगे, एक प्रेसी बना देंगे, और एक आरसी तो वहीं पढ़ के ही करना है. तो प्रेसी और आरसी तो वहीं पढ़ के ही करना है, उसकी तो क्या ही तैयारी करनी है. एक ऐसे है, उसका थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे. दिस इज व्हाट वी यूजुअली सी देयर, and that is where students get beat every year, because they do not pay ample attention. And why am I saying this? They get beat every year because when they write their descriptive English part, they just do it for the sake of doing it. They do not really prepare for it. But the difference is, guys, see, all of you are preparing for your FMNE SI part, so there cannot be a huge gap. Because, guys, if you're clearing phase one, please understand this: if you're clearing phase one and if you're going to phase two, that means you are good enough. Yes, all of you would agree with me, right? So all of you who clear phase one and go to phase two, they are good enough, right? अब उसमें वहां पे सिर्फ डिफरेंस रह जाता है कौन कितने एफर्ट डाल के जाता है, कौन कितने परसेवरेंस और डेडिकेशन के साथ अपने एफर्ट्स को मूव करता है फॉरवर्ड, राइट? तो अब वहां पे what I'm saying is, वहां पे आप बहुत ज्यादा गैप नहीं क्रिएट कर सकते उदित. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्कोरिंग लेट्स से 72, द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू वुड बी स्कोरिंग आइदर 70 और 71 और 73, राइट? मे बी अ मार्क अबव और बिलो. थोड़ा बहुत, कोई बहुत ही बिल्कुल ही अलग है तो कोई 68 पे चला जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्टे वेरी क्लोज. तो उनका एवरेज स्कोर बहुत क्लोज रहता है सभी का. वहां पे आप गैप क्रिएट नहीं कर पाओगे. बट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज द पार्ट वेयर यू कैन रियली क्रिएट अ गैप. If you score beyond 75 and the other person is scoring 68, 67, the 7-8 marks gap that you create here will take you to the final list. So that is why I always say descriptive English is the game changer. And you guys, you will, and students who have appeared in this exam will agree with me last year, or in the previous attempts, or in other exams, कि descriptive English में हम जितना focus करते नहीं है उतना करना चाहिए, because this is this is a this is a vertical which you can really excel. Reason being, इसमें सिर्फ 3 questions हैं. There are only 3 questions in this, right? And there is not much to study here. You just need to practice. It's all about practicing. See, guys, Prezi writing, you just need to understand the core concept, and you just need to practice it a few times. And what else is required is your comprehension ability. If you read the passage carefully and if you are able to articulate it well, it's a job well done. Similarly for reading comprehension, right? Now, passage is given to you in the paper. You just have to refer to the passage and find out your answers and elaborate them in your own words, right? So there is no such thing as any homework or any hard work that you have to do for descriptive English. And it is going to give you more marks and more score. Then why do we not focus on this? I'm not sure, because probably we take it for granted. इंग्लिश तो करी है ना सर, वो वही बात है, वो घर की मुर्गी दार बराबर वाली चीज हो जाती है कि सर इंग्लिश तो we've always been doing it all our life. So what is the issue here? The issue is not that you've been doing it. The issue is to excel at it. And if you do that, you'll score very well. And this will add up to your final score and take you to your destined job, right? So generally, it has been observed that descriptive English is the most neglected paper while preparing for RBI Grade B Phase 2 exam. Now, descriptive English section, it has 3 questions: essay, Prezi, and reading comprehension. Now, students ask me, sir, can letter be there? Can report be there? Not in RBI. It never has been. It never will be, right? So there'll be only 3 questions. Yes, it should be in your own words, Sandeep. Not exactly like, what I mean by own words is you have to rephrase the information given in the passage in your own words. You cannot add anything from outside the passage. And repetition is strict no. We'll do that, Sandeep, in the reading comprehension lecture. But repetition, copy and pasting will lead to deduction of marks. Please remember that. So it has to be presented in your own words. But yes, there are certain words which you cannot change. For example, government को change करके क्या लिखोगे? ज़्यादा authorities लिख दोगे एक बार, central authorities लिख दोगे एक बार, stakeholders लिख दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, maybe not that even, right? So वो words तो आपको same रखना ही पड़ते हैं. RBI same रखना पड़ेगा. If you're talking about, let's say, budget की बात कर रहे हो तो budget तो budget ही रहेगा. We cannot change those words, right? But yes, the language has to be changed. The way you're presenting your answer, that has to be in your own words. Past tense में नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है संदीप. We have to write our answers in past tense. You have to follow the tense of the passage that is given to you. If the passage is in past tense, put your Prezi in past tense or put your RC answers in past tense. If it talks about future, write your answers in future. If it talks about something that is going on or something that has been done, you write it in the same way possible. So you do not change tense of the answer. You keep it in the same tense as it is.
एक्टिव को पैसिव में भी कुछ नहीं करना है उसमें संदीप आपको, you just need to rephrase it in your own words. Why I say use active passive? Because passive sentences, they they seem a little more formal. For example, if I say we have come a long way, or let's say we have developed, or we have, let's say, we have progressed in let's say data science in the recent years a lot. So instead of writing we have improved or we have developed, if you write it in a passive form, there is a lot of development that is observed in data science in the recent years. So this looks more formal instead of using pronouns here, right? Utkarsh, आंटी को गुड मॉर्निंग बोलना, और बोलना कि आई एम गिविंग माय बेस्ट, ठीक है, सर भी बोल रहे हैं, है ना, कि so guys, this is what we really build on, the ecosystem that we provide you, ठीक है उत्कर्ष, nothing to worry about, ठीक है. This is her love for you, कि यार वो कितना केयर कर रहे हैं, सुबह बेटा पढ़ रहा है 10 बजे उठ के, है ना. So she's all about how his exam is going to be. So I should do everything about you. So see, this is care that we want to provide you. Hand holding and caring for you at every turn of time. So very good. Keep it up. Can we rephrase the data like more than half? Yes, you should, Neeraj. Not you can, you should. Actually, you should, because data, although it is not supposed to be provided, but if let's say there is a there is a statement which you feel is really important. For example, there was a statement which says 55% of the population is still dwelling in the rural areas. So instead of writing the same thing 55%, what you can do is more than half of the population still lives in the rural areas of the country. So yes, that should be done, Neeraj. Passive sentences suits well for all the answers, Manu, by the way, not just essay, for Pressy as well, for reading comprehension as well, because I feel, and I think you'll also agree with me, that passive sentences are, a little more formal there, right? They are formal in their, in the language. So instead of saying, I feel it should be done, it is felt. So if, instead of writing we feel, or if you want to write an opinion, for example, if you're, let's say in an essay, you're writing a solution that, let's say research and development should be, should be done in this field. So instead of writing we should do more research and development in this field, which sounds more formal to you, we should do more research and development in this field, or more research and development should be done in this field, which sounds more formal to you, the first one or the second one? I think all of you will agree with me. So yes, definitely the second one was, it sounds more formal. So that is why I say कि passive use करो, but passive sentences does not mean कि उसको past tense में use करना है, guys. If you know passive sentences, तो passive sentences सभी में होते हैं, past में भी होते हैं, present में भी होते हैं, future में भी होते हैं, right? So we need to do this. So instead of writing we need to do this for future, it needs to be done, right? So we are talking about future, but in passive sentences. So I know, guys, you have so many questions, but this is what this crash course is all about, right? To solving your each and every query so that you walk into the exam, your head held high and with a lot of confidence inside you that I know this inside out, right? I've done this, I've practiced this enough, and I'm not afraid of this. So वो panic नहीं करना है, वो butterflies लेके नहीं जाएंगे हम exam में कि पता नहीं क्या हो जाएगा वहां पे. We'll go prepared, and that is what we call preparation. So we are doing this pre and we are preparing for the exam. So this is where you have to sweat a lot, and then you'll see that you'll do very well in the exam, right? Only the first lecture will be streamed on YouTube. If you want to join these sessions, you can join the crash course, guys. Now you must be thinking, sir, aap to course बेच रहे हो. Guys, I'll be very blunt with this. See, if you are doing this for your salary, आप भी तो job के लिए ही कर रहे हो ना, सिर्फ आप free में काम करोगे RBI के लिए? नहीं करोगे ना? Exactly, you're doing this for your salary, so we are doing the same, right? And we are not selling you anything wrong. We are presenting this session to you for the same reason. बच्चों को बहुत ही confusion होता है. Students are confused a lot of times. Sir, we are not sure. We are skeptical. What are you going to teach in this course? So this is what we are going to do in this course. I know, Sandeep. First phase one was really uh, panicking. Students panicked a lot. Vinci, how was this? How was phase one? Utkarsh, Amit? I know it was a challenging situation, but that is what it is all about. See, that is what they want to see. The cutoff will come down, definitely, 100% sure. But they want to see students who can perform under pressure. That is the whole point of this exam, right?
No, Mrityunjay, paper is not evaluated through a software. Your mistakes will be evaluated through a software, spelling mistakes. And you guys, when when you buy a computer or when you buy a mobile phone, do you remember when you just turn it on for the first time, you choose the language as American English or British English, and that is what it follows. If you choose British English, at that point of time, it will follow British English. Got it? I know, Utkarsh. It was a, it was hellfire that day. Emotions were running high, and we had to bear the brunt of that. हमें बहुत गालियां पड़ी उस दिन कि सर ये ऐसे कैसे आ गया, ये इतना easy कैसे आ गया, ये इतना मुश्किल कैसे आ गया. But see, this is what it is all about. I always say, students, RBI is known for surprising the aspirants every time, and you should go with the open hand there. Do not expect anything. If you expect ये ऐसा होगा, वो वैसा नहीं होगा. I can guarantee you that. Yes, so you should write COLOUR, Mrityunjay. Use S, not Z in spellings. संदीप, यस, मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब वो दिन ना, मतलब मुझे अच्छा फील इसलिए हुआ कि एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट करवाए थे. आई कंडक्टेड 2 मॉक टेस्ट ऑन माय यूट्यूब सेशंस. अगर आपने देखे थे विंशी वो वाले, नहीं देखे? अरे उनमें मैंने एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस करवाए थे जो पेपर में आए हैं. सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए दोनों शिफ्ट्स में, वो मैंने वहां पे डिस्कस कराए थे. दे वर वेरी हेल्पफुल. जिसने वो 2 सेशंस देखे ना, पक्का उनके इंग्लिश में एटलीस्ट 22-23 से ज्यादा अटेम्प्ट हुआ है. इंग्लिश वाज द सेवियर, आई नो मैक. थैंक यू संदीप, थैंक यू फॉर दैट. मुझे खुद को यूं हो रहा था जिसने वो सेशन काश सभी ने देखे होते, दैट वुड हैव रियली रियली हेल्प द एस्पिरेंट्स. पेपर लीक नहीं था. पेरेंजम्बल्स, हाँ एग्जैक्टली, पेपर लीक नहीं था. बट गाइज, यू कैन ऑलवेज एंटिसिपेट. यार 13 साल पढ़ाते होगे तो यू कैन ऑलवेज एंटिसिपेट कि यार पिछले सालों में आरबीआई ने क्या क्वेश्चन दिए, तो अब की बार वो क्या कर सकता है. इस साल व्हाट कुड बी द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट ही कैन थ्रो एट यू. तो दैट इज व्हाट वी एनालाइज एज टीचर्स, एज मेंटर्स, एंड दैट इज व्हाट वी पुट फॉरवर्ड टू यू. तो वो उसी लिए होता है कि यार अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हमने, ताकि आप हर चीज में एनी क्वेश्चन इज गिवन टू यू. जैसे आपकी बार वो नहीं आया, डबल फिलर्स बहुत ज्यादा नहीं आए, राइट? पैराजम वो बहुत ज्यादा नहीं है, सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत ज्यादा नहीं आए, ईडियम फ्रेजेस नहीं आए इस बार, राइट? मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए, जो मुझे लग भी रहा था कि शायद नहीं आएंगे आपकी बार, बट वी स्टिल डिड देम. तो आई होप दीज सेशंस वुड डेफिनेटली हेल्प यू. आई नो युवराज, अगर वो 2 मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे तो पक्का उससे बहुत हेल्प मिला होगा. तो गाइज, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि फेज 2 में भी मैं यही कह रहा हूँ. आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग टू यू, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन. ठीक है? कि अगर आपको लग रहा है कि विल बी एबल टू हेल्प यू, कम जॉइन अस एंड विल स्ट्राइव टू डू दैट, एंड वी ऑलवेज डू. अगर आपको लग रहा है इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, देन यू आर द बेटर जज गाइज. ठीक है? अब उसमें कोई फोर्सफुली तो नहीं कर रहा आपको ना, राइट? बट वी आर प्रॉमिसिंग दैट वी विल स्टे विद यू एंड विल ट्राई टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल. ठीक है? तो गाइज, याद रखना, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हैज अ लॉट ऑफ वेटेज, सो प्लीज spare or please allocate ample time to descriptive English in your preparation journey. Otherwise, it will all go to waste. अगर English में एक question भी आपका छूट गया ना guys, please understand you are already out of the race. I can, this exam is that critical. Because guys, अगर आप let's say due to scarcity or dearth of time in the exam आप type नहीं कर पाए, आपका 1 या 2 question reading comprehension में छूट गया, right? या आपकी press ही छूट गई. So you are already scoring not out of 100 but out of 70 marks, and out of 70, even if you score 55, which is excellent, but out of 100, 55 is nothing, and you are out of the race. Please remember this. So I'm not trying to scare you, I'm just trying to tell you the reality, guys. Please understand this. Absolutely Sandeep, true. चलो guys, तो no more messages now. अब शुरू करते हैं अपना सेशन. ठीक है? अपना पढ़ते हैं और उस पर फोकस करते हैं. Let's start with the session and let's focus, let's build up on what we are going to learn in this session, guys. Every question has 2 sessions to it. So essay, there'll be 2 sessions. One is today, one will be tomorrow. Then reading comprehension, Pressy will be on Monday and Tuesday next week, and reading comprehension will be on Wednesday and Thursday, 10 a.m. in the morning, so don't miss the sessions. Two sessions, but they're very long marathon sessions, so they'll tell you, we'll discuss everything in these sessions. The first session we have kept to understand the the intrinsics of these of these questions. कैसे होता क्या है, कैसे draft करते हैं. We'll learn everything about the do's and don'ts, tips and tricks, everything about essay writing, drafting, articulation, everything. And the second session will be live essay practice. So tomorrow I'll give you topics right here in the session and we'll be practicing them. I'll be asking you to put down your points right here live, and then we will discuss that which point should be mentioned and how to make this essay if you are sitting in the exam. So that will help you a lot. So this live practicing
will give you the cutting edge, guys. And this is the key part, the part that will take you to your desired result, to desired score in this paper, right? So we have segregated both the sessions that way. First session will be about the topic, the do's and don'ts, the how and how nots, and the second session will be about live practicing. Same with Prezi. First session will be about understanding what Prezi writing is all about, how to write a Prezi and whatnot. Second session will be practicing live Prezi in the sessions. So this is how it will go. Same with reading comprehension. Got it? So that's the agenda for these sessions. So we should be clear before we begin with this, guys. Chalo. Now, if you don't know, I'll again quickly tell you the syllabus. The syllabus for a descriptive English, the weightage for English section is 100 marks, and the time allocation for that is 90 minutes. Right? In those 90 minutes, you'll be given three questions. Oh, this is wrong. You'll be given three questions: essay writing, Prezi writing, and reading comprehension passage. Essay writing is for 30 marks. So 30 marks for essay. Prezi writing will be the second question, will be for again 30 marks. You'll be given a passage for your Prezi, and you will have to read the Prezi and bring it down into a specific word limit between maybe 150 or 170 words, and you'll have to draft a Prezi right there. And then third question will be a reading comprehension passage, which is for 40 marks. Now there may be four or there may be five questions. Now recently we have seen five questions in this, so 4 or 5 questions will be for 40 marks. So you have to understand every question is for 8 marks. So guys, you've done your graduation and post graduation, right? So Utkarsh, do you remember in your graduation how much did you write for an 8 mark or a 10 mark answer? है ना? 3 लाइन लिख के तो नहीं आते थे, और 3 लाइन लिख के भी आए तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे पूरे मार्क्स आएंगे, if I'm not wrong. So this is all about elaboration, guys. You have to understand the psychology of the questions in this first. That what is the point of giving you reading comprehension again in phase 2 when they've already tested you in reading on reading comprehension in phase 1? Now, this reading comprehension is different. In phase 1, it was objective type questions, but this is elaborative questions. You have to elaborate your answers, find out, infer, and elaborate your answers. So that is the key. So this is for 90 minutes. Now, guys, you have to segregate your time very smartly, and you have to practice it in the same way. We cannot go in there thinking that, okay, let it take as much time it takes. I'll just try to do my best. You'll not be able to complete the paper at the end of the day. At the end of the day, please remember that. So you'll need to practice this right now. That whenever you're practicing your essay, you start a timer in your mobile phone or in your PC or in your laptop, and then you stick to your time limit. You finish your essay within 30 minutes if you can do that. Now, if you can do that every time that when you're practicing this, you'll be able to execute this in the paper. But if you just go blindly without thinking about the time management, you will not be able to complete the paper, guys. Please trust me on this. I have seen this happening in the past. Students feel, sir, 3 क्वेश्चन ही तो हैं, आप देखो ना FMESI में कितने सारे आ रहे हैं, वहां पे भी तो करेंगे ही ना, तो वो कर सकते हैं तो ये भी कर ही लेंगे. नो गाइस, वहां पे आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर रहे, यहाँ पे आप ड्राफ्ट कर रहे हो. इसमें आर्टिकुलेशन कम्स इनटू प्ले. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग द पेपर. यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन द टाइम लिमिट इटसेल्फ, राइट? सो ये ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. ऑनलाइन मॉक टेस्ट लास्ट टाइम जैसा संदीप, you can take mock test. That's a part of your course, Sandeep. In this crash course, you can take mock tests. There are 5 full-length mock tests, and we will provide evaluation and feedback for the same. 3 पेजेस उत्कर्ष, आई नो. तो 8 क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स के लिए 3 पेज लिख के आते थे, तब जाके कहीं 4-5 मार्क्स मिलते थे. सेम हेयर. अब यहाँ 3 पेज तो नहीं लिखने, बट you'll have to write ample words. So we will discuss that. Shivam, a good question, sir. Which should we attempt first, essay, Prezi, or RC? Now, guys, I always feel this is subjective. You know why? Because I always feel everyone has this, कि मेरा essay strong है, मेरी Prezi ठीक है, reading comprehension थोड़ा weak है. Some people feel मेरा reading comprehension बड़ा strong है, Prezi ठीक है, essay में मैं गड़बड़ कर जाता हूँ. So everyone has his own sort of fears and strengths. So always build up on that. If you always start with your strong suit, always start with your strong part. Because if you start with the difficult one, you will obviously take more time, and there is a chance that you can, panic. For example, if you allocated 35 minutes to reading comprehension, and this is the part you feel always this is the toughest for me, right? You start with that, and let's say the passage was new, you were panicking. Obviously, the clock is burdening down upon you, right? You can hear the tick tick every second in the exam, right? Passing by. So when you do that, and if you take a little more than 35 minutes in reading comprehension,
And then when you look at the paper, that okay, I've already spent more than in the time that I've allocated for reading comprehension. I do not have enough time left for Pressy and Pressy and essay. Then you start hurrying up, and when you start hurrying up, you tend to make mistakes. And then when you make mistakes, or when you try to finish it off with a shorter word limit, or when you do not stick to your plan, it will always lead to poor marks. So I always feel, start with your strongest question. If you feel my essay is strongest, start with your essay. Be quickly done with it. If you have allocated 30 minutes, try to finish it in 25, 27, so that you can save more time in the paper. And then when you allocate more time to your difficult part, that will bring you the confidence, that will get you the confidence that okay, now I'll be able to complete this section in the exam. Got it? We'll discuss that, Rahul, in the sessions itself. No, there is no separate, but Surbi, if you read the official instructions, they have mentioned in descriptive English that there will be 3 questions, 1 essay, 1 Pressy, 1 reading comprehension passage. And this has been mentioned in your official notification, that these will be the 3-4 questions that can be given to you, right? But in the last 6, 7, 8 years, I think 7 years, since descriptive English started in phase 2, there has never been a 4th question in RBI. There has always been essay, Pressy, and reading comprehension. There is no mention of report or letter or memo or any other sort of articulation. So you can comfortably believe that yes, there will only be 3 questions: essay, Pressy, and RC, right? Yes, you will get a rough sheet, Utkarsh, rough piece of paper for your essay structuring and a rough draft, and for writing down your key points, and you have to use that. You should use that in the exam. ऐसे नहीं होता इसमें संदीप, ऐसे नहीं होता इसमें. You are just given aggregate time. Descriptive English में you'll just be given aggregate time. You can start with any question and then you can move on to the next. इसमें वो नहीं होता कि आपको पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, क्योंकि इसमें designated time नहीं है अलग अलग questions के लिए, right? FME, SI, English तीनों अलग अलग पेपर होते हैं संदीप, right? चलो guys, so let's start with that. अभी कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, एंड अभी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ एसेज यू फेस इन द पेपर एंड हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर, राइट? सो आई एम डिस्कसिंग ऑल योर passages with you. Number 1, from the year 2017. Now these were the topics. Now up till 2019, the essay used to be for 40 marks. So essay used to be the biggest chunk. Reading comprehension used to be for 30 marks, but after 2019, in 2021, they reshuffled it. They gave RC for 40 marks and essay for 30 marks, right? So now we see that essay, the weightage for essay is 30, Pressy is 30, and RC is 40, but it used to be different. So in 2017, the topics that were thrown at the aspirants were non-performing assets management. Is India ready for digitization in the face of cyber threats like ransomware, right? SBI and other banks merger, and nuclear power in India. Now, these were the topics that were given to the aspirants. Now, non-performing assets, this topic was based on finance. We can say that. Ready for digitization in the face of cyber threats. I think we can put it under current affairs, right? SBI and other banks merger. This is again a topic based on finance. And nuclear power in India, again based on current affairs, right? So up to 2017, that was the trend. Now, 2018, advantages of UPI over money transfer, a topic based on finance. Financial inclusion, a requirement for all ages in India. Again, very clearly a topic based on finance. Crowdfunding, the new phenomenon in financing. Again, a topic based on finance. Then positive and negative effects of demonetization on Indian economy. Now, in 2018, it was sort of current affairs based, because that was recently done, demonetization, but we can still put it under the context of finance because it was really related to finance, the positive and negative effects of demonetization. So we can call it finance. And then measures for promoting microfinance in India. So 2018 was a very surprising year for the aspirants. All 5 topics were based on finance. So non-finance background students, they really panicked, and they, I remember, they started protesting against RBI. They raised a few RTIs and whatnot. They did write a few emails. So that, and the point was, so that means the RBI is not for non-commerce background students. Is that so? But then the question was, okay, demonetization is not a topic for finance or commerce students, right? Then financial inclusion is not really a topic for
finance students only. So financial inclusion, demonetization, these can also be put under economic and social issues, right? And that was their explanation. Okay, you cannot just call them finance based topics, they're also based on economic and social issues. So you should have been prepared for that, and you should also look into this, guys. When you're preparing, think about the topics that you can face in the exam. Third, 2019, higher education was one topic that was given to the aspirants. Stress among youth. Now, this was a very static topic, and for the same reason. So next year they were bound to add at least one topic which was very generic. Stress among youth. This is not finance. This is not current affairs. This is not even ESI or FM or any other topic. This is a static topic. So they started doing this from the year 2019, that they started adding one static topic for the students who are not from commerce backgrounds. Higher education, again, a social issue, right? NPFC loan collection issue. This we can call this finance based topic. Democracy and importance of vote, again, a social issue, right? And then scope of 5G in India. Then at that point of time in 2019, it was a current affairs based issue. So these were the mix of topics that we started facing in from the year 2019. 2020, there was no paper due to COVID. 2021, now the topics were pros and cons of teaching coding or computer languages to school students. This was the first topic. Pros and cons of teaching coding or computer languages to school students. So we call it a static topic? Right? Social topic, static topic, because this did not require any current affairs or any finance or economy related information. The importance of creative thinking in business. Now, this was a management based topic. So this was again a surprise for students this year in 2021. Third, again, a very generic topic. An ounce of prevention is pound worth of cure. Look at this topic, guys. Okay, simple topic, prevention is better than cure. Now, what would you write in such a topic? Amit, Utkarsh, Vinci, just think out of your head. कि क्या लिखते हैं हम इस टॉपिक में यार? An ounce of prevention is better than a pound worth of cure. मतलब I mean prevention is better than cure. How would you define your essay? क्योंकि आप prepare तो ESI FM करके गए हो पेपर में. So see, this is what I say. RBI is known for surprising aspirants in the exam, and that is the point here. You need to look at the past to understand what can be thrown at you in the future. So there was one very generic, very static topic, we can call it. Now this topic, now such topics are always based on your English articulation. Now इस topic में कुछ भी information काम नहीं आएगा, ये तो सारा आपको narrative way में लिखना पड़ेगा. You have to create a narration there. ठीक है, जिसमें आपको emotions और feelings को evoke करना पड़ेगा अपने essay में. Now, okay, this is why prevention is important, and then you'll have to cite different examples in your day-to-day life, then in broader context and whatnot, right? Now, next, future of BPO industries in India, business process outsourcing. Again, this was topic which was based on maybe current affairs. You can call it current affairs, but it was again, nobody expected this. So 2021 was again a very surprising year for students. See, students went prepared for financial topics like merger of banks and privatization of banks and whatnot. And even we anticipated such topics that year, but we were wrong. And I'm ready to accept it, guys. We are not gods. We cannot, predict every topic, every question that is going to be, but we can help you in preparing yourself for such issues. So this was the trend in 2021. Mix of topics, but nothing based on finance specifically, nothing based on economy. The topics were a mix of generic, static, management, and current affairs, right? Now, coming to the previous year paper, now look at the topics, guys. Advantages. Now this year, up in 2021, the weightage had been changed from 40 to 30 marks. So the topics that were given were advantages and disadvantages of renewable sources of energy. Discuss how green grid initiative under OSWOG initiative will solve these disadvantages, right? This was a social issue, I think, so we can put it in the social sector, economic and social issues, right? Second, role of women entrepreneurship in economic growth in India, maybe again based on social sector, right? Economic and social issues. Third, peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding, a quotation by Albert Einstein, and you had to elaborate on that. Look at this topic, guys. Now in the wake of Ukraine Russia war, there could have been a lot that you could have written, but the topic did not mention Ukraine Russia war. It was a very generic static topic, that peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. Obviously you should have written
have mentioned, if somebody was there, you should have mentioned Ukraine-Russia war, or previous wars between America, Afghanistan, Iraq, and whatnot. But the point was, to get to the conclusion that are you able to prove that yes, things can be solved on table, not on the war field, right? Because on the war field, either one will win and one will lose. Third thing cannot be done there, or there'll be a ceasefire. But it can only be solved on the table. That was the point, right? So very static topic, and then India has become a medical destination of the world. Again, a social topic. Now, guys, can you expect any such topic this year? Now, I'm saying FMN ESI. अभी अब ये चीज आपको समझनी है, guys. See, since they segregated FMN ESI, they designated a separate paper for FMN. Since they have done that, जब से उन्होंने FMN ESI का एक separate paper लेना शुरू किया है, what I have observed is they are not putting FMN ESI based topics in your essays, in your descriptive English, because that would be, too problematic for the students. क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले FMN ESI पेपर अलग से नहीं होता था, राइट? तो वो इसी में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर ही वो FMESI के क्वेश्चंस पूछता था अप टिल 2019, बट देन दे चेंज द पैटर्न एंड देन दे came up with a new pattern for complete overhauling of the whole, both phase 1 and phase 2 दोनों चेंज हो गए थे, ठीक है? क्वालिफाइंग सेक्शन चेंज हो गया था, मेरिट सेक्शन चेंज हो गया था, सिमिलरली इंग्लिश की वेटेज 1/3 हो गई थी, FMESI का पेपर की वेटेज ज्यादा हो गई थी, एंड they had they were given a separate, two different separate papers. So तब से I have observed कि अब से मतलब since FMESI had separate papers for them, since then इंग्लिश में बहुत ज्यादा FMESI नहीं आता है, ठीक है? इंग्लिश में ज्यादातर जो टॉपिक्स रहते हैं, they are inclined towards your economic and social issues, topics which are which are common to everyone, even if you are from a commerce background or even if you are from a non-commerce background. See, if I'm talking about financial inclusion, Amit Verma, I think this is a common topic for everyone. Am I right? Utkarsh, if I'm talking about space exploration, if I'm talking about let's say COP27, climate change, right? If I'm talking about let's say if I'm talking about ONDC, if I'm talking about your UPI payment system, right? So these topics are not finance based anymore. These topics should be available and are available to any and every person out there. So your understanding, your ideology, your mindset should be to prepare for such topics which are broadly you can cover from different verticals that I'll tell you. For example, education. अब हमें आपकी smart approach क्या होगी यहाँ पे उत्कर्ष and Vinci? Education के अंदर कितने टॉपिक आ सकते हैं? Let's see education as a vertical. What most students do, they tend to prepare for topics. कि सर हम टॉपिक्स बता दो, हमें टॉपिक प्रिपेयर करते हैं. टॉपिक्स आर कितने टॉपिक्स हो सकते हैं? आई कैन गिव यू 1000 टॉपिक्स राइट नाउ, नॉट 100, 1000. इतने टॉपिक बन सकते हैं पोटेंशियली. कर पाओगे अगले 20 दिनों में? नॉट पॉसिबल. मैं 20 टॉपिक भी दे दूं, शायद वो भी ना कर पाओ, क्योंकि FMESI भी है, करंट अफेयर्स भी करना है. सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक. सो द स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे, व्हाट शुड बी अ स्मार्ट अप्रोच हियर, कि इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर टॉपिक्स, यू शुड प्रिपेयर फॉर वर्टिकल्स. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, under education, let's say education is a vertical for economic and social issue. So under education sector, how many topics can we find? One, new education policy, Amit. Yes. Utkarsh, women, child education or women education, girl education. Third, online education, Vinci, right? And Manu, maybe another topic could be overhauling the education system of India, right? Probably that could be one potential topic. अगर देखो, अगर मैं इन चारों टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहता हूं, if I want to prepare for all these 4 topics, so what I need is to first prepare for education sector. कि मुझे एजुकेशन सेक्टर की इंट्रिंसिक्स पता होनी चाहिए. What is the average literacy rate of India? Which state has the highest literacy rate, which has the lowest? What has been the recent development in the last 10 years? Has the literacy rate improved? Then what about new education policy? Do you know something or everything about that? So when you cover the vertical from a bird's eye view, bird's point of view, you understand what bird's eye view means? ऊपर से उसको देखना, अंदर जाके नहीं, पहले ऊपर से प्रिपेयर करो वर्टिकल्स को. Similarly, healthcare could be another vertical. Now under healthcare, Vinci, Manu, what topics could be there? Ayushman Yojana, COVID-19, right? वैक्सीनेशन ड्राइव. उसके बाद क्या है अपना इंडिया एज अ मेडिकल टूरिज्म हब, ये देखो दिया ही हुआ है पिछले साल उसने, ये देखो, राइट? देन द मेडिकल सेक्टर ऑफ इंडिया and what role it plays in the economy of the country. So instead of preparing for these different topics, first prepare for medical sector.
first know about the medical sector of the country, the basics of that. तो ये चीजें तो बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए गाइस बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि इकोनॉमी की बाइफरकेशन क्या है, कि what percentage of economy is dependent upon services sector, what percentage is dependent upon manufacturing, what percentage is based upon your agriculture and other allied sectors. So यहाँ से अपने क्लासिफिकेशन शुरू करो. फिर अंडर मैन्युफैक्चरिंग कितने MSMEs हैं, उसमें कितने आपके यूनिकॉर्न्स हैं, कितनी न्यू अपकमिंग यूनिट्स हैं, कितना उनका इकोनॉमिक आउटपुट है, राइट, कोविड में उन पे क्या रिजल्ट रहा. जब ये फैक्ट्स आप पता करने लगोगे ना गाइज, दैट विल एम्पावर यू फॉर योर एग्जाम. अगर मुझे पता है, जस्ट लिसन टू दिस एग्जांपल अमित, कि अगर मुझे पता है कि ड्यूरिंग कोविड-19 यू नो or maybe since 2014 there have been 66, I'm just thinking of a number, okay, there have been 6 lakh what do you say startups in the country, right? अगर मुझे ये चीज ये फैक्ट पता है, एंड मुझे ये भी पता है कि ड्यूरिंग कोविड-19 आई थिंक 80% ऑफ द स्टार्टअप्स फेस्ड क्या बोलते हैं अपना लॉस. वो सभी नहीं किया, नॉट जस्ट उन्होंने, बट स्टार्टअप्स ने तो किया ही है. बट the other point is I also know that there were many other startups which came into existence during COVID-19 which played out very well for the economy and for the country, like pharma, right? Like pharma was a very and agriculture as well, right? So अगर मुझे ये basics पता है, if I'm writing any topic out there, can I not use this information in my essay as a factual information? So ये है आपका गेम यहाँ पे. And guys, please understand this. I'll discuss this later on in detail. Please remember this. Although they call it descriptive English, and people think in their head that this is all about English only, कि यहाँ पे सिर्फ आपकी English test होगी, grammar, language, vocabulary ये test होगी, your content will not be of that importance. No, it is exactly the opposite. What you write there will fetch you the best marks possible, but yes, at the same point of time your language should be errorless, it should be error free. ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि वो इंग्लिश है, right? You should be able to articulate your sentences well, but how will you fetch the best marks possible? How will you stand out if, let's say, 20,000 aspirants are appearing in phase 2? How will you come into the top 1,000 aspirants? That is 0.02% or 0.01%. So how to fall into that category, to be shortlisted for interview? You have to stand out, and to stand out you need to do things differently. And how to do things differently? Prepare your what we call the backbone of your of your articulation. For your essay, there are 5 things that I can put down right now which act as backbone of your your theory, your thesis. Number 1, facts. Number 2, data. Number 3, statistics. Number 4, reports. Number 5, schemes. If you know these 5 things, it will help you in 3 magnificent way. Number 1, it will fetch you more marks possible. Right, I'll give you a simple example. I do that usually in most of my sessions, but I'll give you again. Right, Utkarsh, if I start, let's say there was a topic about the challenges in agriculture sector of the country, right? Let's say this was the topic in the essay, and you hear 2 openings and you tell me which opening sounded sound better to you. First opening was, let's say, according to Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, the country can never prosper unless the farmers of a country are poor. So this is high time we started working for the prosperity of the farmers. Let's see, this is one opening, right? And look at the other, listen to the other opening, and you, let's say you are the evaluator. ठीक है, अपने आप को evaluator मानना और फिर मुझे बताना किसमें कौन सा openings आपको ज्यादा impactful लगा. ठीक है, ठीक दोनों होंगे, लेकिन किसको ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे आप. लिसन टू द सेकंड ओपनिंग. सेकंड ओपनिंग इज लाइक दिस. Even after 75 years of independence, in 75 years of independence of India, more than 57% of the population is directly or indirectly dependent on agriculture and allied sectors. But unfortunately, the contribution of agriculture sector to the GDP has only been 17 to 18%. Now, this proves that agriculture sector has become quite unproductive. And that is the reason it is the need of the hour to focus on the agrarian economy of the country. Which opening sounded better to you guys? Now, guys who are watching this session on YouTube and who are here, please do share your honest input with me. क्यों second वाला क्यों? Not वो तो मुझे पता है second वाला अच्छा लगा होगा आपको, but the reason is why. See, because it was proved to you not just by my words, by my opinions. It was proved to you with facts, with data, with provable, verifiable facts, that yes, this means this is the truth.
And I'm not saying just because I feel it or I think about this. This is because I can prove it with facts that this is the outcome. And when you prove your thesis with with these facts and data, it will help you in three good ways, three magnificent ways. Number one, it will fetch you more marks. Number two, it will save your time. See guys, if I have to create a quotation and if I have to write my language in my like the first opening, Pandit Jawaharlal Nehru and whatnot, beautiful words and whatever, right? It will take time. But if I only have to put facts and data there, do you think, Utkarsh, it will take a lot of time? Because I already remember data in my head, right? So I don't think it will take a lot of time for me to put down the data there, right? So it will fetch me more marks, it will save my time, and third best thing, it will reduce your potential mistakes. See, when you write everything on the basis of your opinions, your language, you know, you tend to make grammatical or spelling mistakes because obviously time is running. But if you are only putting facts and data, it will reduce your potential grammatical or spelling mistakes, because when you're putting data, I don't think you can make mistakes. Am I right? So it saves your time, it fetches more marks, and it reduces your mistakes in the exam. What else do you need यार? यही तो है सारा गेम इस पेपर का, राइट? बट हाँ, नो फेक डेटा सौरभ, ऑब्वियसली वो बना के मत लिख देना, क्योंकि जो द पर्सन हु विल बी इवैल्यूएटिंग योर पेपर, डू यू थिंक ही इज अ 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट? नहीं, he'll be retired RBI or retired NABARD or retired SEBI or some good person who's retired from a very good post. He'll be evaluating your copies. He knows things since 1950s 60s. तो अगर आप कुछ भी झूठ लिख दोगे, it will be pointless, it will be caught, and वो फिर वहां पे वो गलत impression जाता है, right? Exactly, Utkarsh. So see, when you can verify your thesis, see, thesis उसी को बोलते हैं उत्कर्ष. Thesis का मतलब ही यही होता है कि when it is based on research, right? And you've done that research before the exam, and that is what you're putting there. So guys, I always say start preparing for your verticals first. Instead of preparing for topics, start preparing for verticals. Sir, can you give us some verticals? Yes, education, healthcare, climate change, what do you say, economy, growth, right? Then space exploration, then defense investment, then India in 2047, the growth style of India, the future of India. Or let's say let's say chip manufacturing industry, ONDC, online shopping or online exposure to whatever it is, online education, right? Then let's say, what about have you all heard about Web 3.0? Yes. So have you thought that that can be a potential topic this year? Maybe, may not be. Right, but what if it is Chandrayaan? Yes, space exploration, Manu. True. तो जो चीजें आपको अभी अपने आसपास देखो गाइस, पॉलिटिकल चीजें छोड़ के, ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस छोड़ के, ठीक है, जो आपको वर्थ वाइल लगता है ना, डू रीड अबाउट इट. एंड द ओनली वे टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट इज बाय learning something about everything. AI, chat GPT, very important, absolutely, right? ONDC, CBDC, yes, it can, ऋषभ. अगर इंग्लिश में नहीं आएगा तो FMESI में जरूर आ सकता है, right? Telecom sector, 5G 6G has been rolled out. E-rupee, yes, I know. E-rupee हो गया, आपकी virtual currency वाला हो गया, that is a very important topic, potential topic. But अगर if I'm thinking on a broader context कि अगर यहाँ पे वो E-rupee डालेगा तो फिर ESI में क्या डालेगा या FM में क्या डालेगा, right? So the point is, you need to be ready for everything. See guys, what is the psychology behind these three papers, FM, ESI and descriptive English? The psychology is to test you on your articulation, but the main, the something that you do not understand is they want to understand how well prepared, how up to date you are when you walk into the exam room, right? Do you know something about everything that is going on? Do you know about the disintegration or dissolution of Silicon Valley Bank and the reasons behind it? Do you know what happened to Dish Bank recently? Right? So ये तो आपका FMESI वाला पार्ट होगा. बट इंग्लिश में अगर उसने टॉपिक दे दिया कि लेट्स से द ब्रूइंग क्लाउड्स ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इन रिस्पेक्ट टू दैट, राइट? कि भाई वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ग्लोबल स्लो डाउन और वॉर की वजह से, इन्फ्लेशन, कोविड-19, वो सब की वजह से क्या हो रहा है वर्ल्ड में, और फिर इंडिया कहाँ पे है आज,
राइट? अगर आपको ये सब concretely नहीं पता, you'll not be able to, do justice to your essay out there. So you have to think of your potential topics when you come across such G20 again, very very important. HTM securities, ये तो मुझे भी नहीं पता युवराज, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट HTM securities are, but I think it would be something important. They did not increase it, Nanda. They just tried to confuse the aspirants, कि उनको किसी तरह से पैनिक कराया जाए, right? And that was the point of it, right? So don't fall for the same trap, right? You have to target 400 words, so stick to your 400 words. Even in your FM and ESI, you're given, the bigger 15 marks questions. You're given given word limit is 600 words. But do you really write 600 words, Amit? नहीं, वो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा ना यार, right? That is the point. The first aim is to complete the paper in time. अगर वही नहीं हुआ तो कितना ही लिख लो आप, राइट? कितना भी लिख दो, एक में आप 600 की जगह 800 लिखाओ, चाहे एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, 15 में से 18 तो नहीं मिलेंगे, am I right? The point is to complete the paper in time. That is your first aim. If you're not able to do that, please forget about this. You're already out of the race. So your first aim is to complete the paper in time, right? So Silicon Valley बैंक का फेलियर का रीजन बहुत लंबा है युवराज. There's a lot. There's a huge story behind this. एक लाइन में नहीं समझाया जाएगा. But many things came into play. उन्होंने कैसे लेंडिंग किया, गलत तरह से उन्होंने फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे एंड देन इट ऑल बैकफायर्ड. तो लंबा स्टोरी है. फिर सर आप भी पढ़ते हो क्या ये सब? क्यों भाई? सर आप तो इंग्लिश पढ़ाते हो, व्हाई नॉट? सी इट्स गुड टू स्टे अपडेटेड, क्योंकि मुझे आप सबको पढ़ाना भी तो है. अगर मैं सिर्फ बिना प्रिपेयर करे, बिना कुछ पढ़े आ जाऊंगा आपके सामने, you'll not be able to, I'll not be in a position to tell you how it works, right? And what could be a potential topic and what you should be able to present in the essay, right? Shivam, now that is what we'll discuss in this. ठीक है, अब चलते हैं guys. अब I think all your queries have been, you've understood कि कैसे topics आते हैं आपको पेपर में. Now let's try to decode and let's see के क्या टॉपिक्स हमें करने चाहिए वहां पे, किस तरह के टॉपिक्स हमें चूज करने चाहिए, कैसे टॉपिक्स आते हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. We'll discuss all that guys. चलो, so let's start with this guys. First, this is just a formality sake. You should know the definition of an essay. An essay is a short piece of writing that sheds light on any given topic. Now, this is a very vague term, but I want to discuss this in a proper manner. See, he says, an expert says that an essay is any short composition in prose. Prose means paragraphs, guys. Please remember, in essays, you do not write bullet points, numbers, titles, subtitles. Essay is flow of ideas. Essay is congruence of ideas. Please remember this. So in your FMESI paper, you will be taught to write your answers in bullet points, subtitles, titles, and whatnot. But guys, that is the difference between an essay and an answer. Answer, when you're writing in-depth answers, you should use bullet points, highlights, subtitles, titles, and whatnot. But essay is always written in paragraphs because it is basically discussing a topic holistically from different aspects, from different dimensions. That is what essay is all about. So if I ask you, Amit, that write about the development of Indian economy, so will you be only writing कि इंडियन इकोनॉमी क्या थी, क्या हुई, क्या रह गई, क्या बनेगी, क्या जाएगी? नहीं. You'll talk more about, you'll revolve around the topic कि 1947 में इंडियन इकोनॉमी ये थी. Over the years हमने ये experience किया. There were many prevalent issues like marginal farming, and over dependence on monsoon, lack of infrastructure, lack of policies, and that is when we realized that we need to change the system. That is when we came to the point we welcomed green revolution, white revolution, then LPG reforms of 1991, right? Then you bring it down to the, फिर वो आपको पता होना चाहिए यार आपको क्या लिखना है वहां पे. कि अगर मैं सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, I'm not questioning you on economy. I want to know how much do you know around this topic, कि इसके इर्द गिर्द कितना पता है आपको. If I'm writing advantages of technology, now do you think this is all the whole essay will be about advantages? Many students do this. मैं कल ही ऐसे चेक कर रहा था किसी का, और वो ये कर रहे हैं कि अगर उसने वहां पे लिखा कि चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो वहां पे क्या कर रहा है, उसने पहले पैराग्राफ लिखा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इस तरह से शुरू किया, और कौन से चैलेंजेस हैं, दीज आर गिवन बिलो. नंबर 1,
marginal farming. Number 2, over dependence on monsoon. Number 3, poor infrastructure. Number 4, poor farm to fork chain. Number 5, poor cold storage facilities. Number 6, poor financial services. Number 7, poor research and development and infrastructure. Your technological advancement in agrarian economy, right? Then your less land holding and intermediaries. Then APMCs and these benefits going to middlemen. ये सारे उसने challenges लिख दिए point by point by point. Do you think that's an essay? No, it's not. ये आंसर जरूर हो सकता है. Guys, if this was a question in your FM or ESI, that would be a great answer. But as an essay, this is a very poor essay, because essay is about discussing the topic holistically from different dimensions. So if I talk about the challenges faced by agriculture sector, first I will start with the background. That जो मैंने आपको कोटेशन दिया, अगर मैं स्मार्ट हूं, मेरे को पता है, तो मैं I'll start with that even after 75 years of independence, more than 57% of the population is dependent on agriculture, but the contribution is only 17%. Right? This makes the sector very critical, and there should be a lot of focus for the same. फिर सेकंड जो पैराग्राफ है वो मैं लिखूंगा, व्हाट आर द प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स, सोशल एंगल्स जो है, जो सोसाइटी में जो प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स है ड्यू टू एग्रीकल्चर सेक्टर. ओवर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, मार्जिनलाइज्ड फार्मिंग, लेस लैंड शेयर होल्डिंग, देन उसके बाद poor facilities of your technology and mechanization, then fertilizers की बात करूंगा, then vicious circle of poverty की बात करूंगा, lack of education की बात करूंगा उस एक पैराग्राफ में मैं. This will be my social sector, right? Social angle. Then third paragraph I'll talk about the economic angle, the pressure on economy due to agriculture. के contribution सिर्फ 17% है, लेकिन डिपेंडेंट द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज 57%. तो बाकी को जो बर्डन है वो कौन शेयर कर रहा है? बाकी जो दो सेक्टर्स हैं, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, उससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? सब्सिडीज देनी पड़ रही हैं, फ्री फूड देना पड़ रहा है, राशन शॉप्स देनी पड़ रही हैं, राइट? और उसी की वजह से वी आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. वो इकोनॉमिक एंगल फिर क्या आएगा कि गवर्नमेंट पे कितना बर्डन है उसके एग्रीकल्चर की वजह से, फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज को, बिल्डअप क्यों नहीं कर पा रहे, इंटेंसिव फार्मिंग क्यों नहीं ला पा रहे, उसके इकोनॉमिक रेपरकशंस क्या है, वो इकोनॉमिक एंगल में डिस्कस होगा. देन आई विल कम टू द पॉलिटिकल पैराग्राफ. तो पॉलिटिकल में क्या होगा? व्हाट स्टेप्स एंड मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज लाई है, जनधन योजना, किसान विकास योजना, किसान सम्मान निधि, किसान कृषि विकास योजना. सो ये स्कीम्स को डिस्कस करूंगा. फिर क्या मतलब उनका इम्पेटस क्या रहा है, उनका आउटकम क्या रहा है, दैट विल बी डिस्कस्ड. तो देखो मैंने हॉलिस्टिकली क्या क्या डिस्कस किया. चैलेंजेस डिस्कस किए मैंने सोशल पैराग्राफ में, इकोनॉमिक में मैंने उसका बर्डन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए, पॉलिटिकल में कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स डाले हैं वो डिस्कस किया. देन नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी अबाउट वायबल सॉल्यूशंस टू द इशू, कि अब मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दूंगा कि जो चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशंस क्या है. अगर मैं सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट कर सकता हूं, सॉल्यूशन नहीं बता सकता, व्हाट इज द पॉइंट? then I'll give solutions to the problems. कि solution क्या है उसका? marginal farming का, कि let's bring people more towards the other two sectors of the let's make them employable. एक ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है. let's bring people from agriculture to other sectors and let's make them employable by providing them financial and education services in the rural areas. outreach program बढ़ाओ, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स वो करो. देन एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए जीएम क्रॉप्स लाओ, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाओ, स्टेक होल्डर्स को इन्वेस्ट करने को बोलो, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून कम करो, ओवर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून कम करो, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाओ, फार्म टू फॉर्क चेन इंप्रूव करो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनाओ, स्टोरेज फैसिलिटीज इंप्रूव करो. वो सब मैं सॉल्यूशंस में दूंगा. एंड देन आई लास्ट पैराग्राफ आई गिव अ वे फॉरवर्ड एंड आई कंक्लूड माय एसे. दिस इज कॉल्ड एसे, कि जिसमें आपने टॉपिक को हर एंगल से टच किया है. नॉट जस्ट कि आप एक ही चीज लिखे जा रहे हो. अगर उस सर क्योंकि टॉपिक में तो वहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ था, चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, हमें लगा सिर्फ चैलेंजेस ही लिखने. यही तो वहां पे बच्चा बीट कर जाता है, वहीं पे मार खाता है. कि प्लीज अंडरस्टैंड वट एवर इज द टॉपिक, you have to revolve around the topic, you have to discuss the topic from different dimensions. ये याद रख के जाना in an essay. ठीक है? So I wanted to clear it from the get-go that please make sure you understand this, right? Now let's come to the definition of an essay. So any short composition in a prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, or persuade us to accept a thesis on any subject. Now that is called an essay. So essay is basically your researched opinion, your researched thesis about a topic, which basically, which highlights all the dimensions of a topic. So essay is a comprehensive analysis of a given topic while taking a particular view or stand on it. It takes into account various aspects of the topic along with its critical appraisal. तो ये अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो, comprehensive analysis,
with a particular point of view, or particular understanding of a topic. Then you discuss the various aspects along with its critical appraisal. यही चीज मैं आपको अभी सिंपल वर्ड्स में समझा रहा था कि प्लीज डिस्कस द टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. तो गाइस कम से कम आपके वहां पे बेयर मिनिमम 5 और एट द मैक्स आपके 8 पैराग्राफ्स होने ही होने चाहिए आपके एसे में. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 5 to 8? फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ where you introduce the topic, जहां पे आप background दोगे. You'll open the curtain. You'll introduce your essay to the reader, evaluator, which should be punchy. And as you know, well begun is half done. First impression is the lasting impression. So your intro is the should be the most explosive part. इसमें आपको वो fact देना है जो शायद evaluator भी expect नहीं कर रहा था कि अच्छा यार इतना insightful data थे तो मुझे भी नहीं पता था यार. गजब, बच्चे ने गजब तैयारी की है. इसका मतलब वो जब नोशन एक बार उसके दिमाग में आ जाएगा ना, इवन इफ यू राइट डिसेंट पॉइंट्स इन द रेस्ट ऑफ द एसे, यू विल स्टिल स्कोर वेरी वेल, बिकॉज वो इंट्रोडक्शन का वो इम्पैक्ट होता है. देखा आपने मूवीज में भी, मूवी की ओपनिंग अगर अच्छी हो तो इंटरेस्ट बना रहता है. मूवी की ओपनिंग अगर बेकार हो, बोरिंग हो, तो क्या होता है, इंटरवल से पहले छोड़ के चले जाते हैं. द सेम विल हैपन हेयर कि अगर आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी नहीं है, आधा अधूरा पढ़ के उसको जो उसको एवरेज मार्क्स देना है वो दे देगा. लेकिन अगर आपको सच में, इफ यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू hook the reader. And what do I mean by hook the reader? You have to grasp his his conscious understanding के यार अरे उसके लिए भी जॉल्ट होना चाहिए, एक शॉक होना चाहिए, अरे बाप रे क्या गजब ओपनिंग दिया यार बच्चे ने. तो इंट्रो शुड बी द मोस्ट पावरफुल, जिसमें आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हो. देन नेक्स्ट 3-4 पैराग्राफ्स विच वी बेसिकली कॉल द बॉडी पार्ट. A body part में we will discuss the different dimensions what I was talking about, social, economic, political, all that will be discussed in the body part. Then challenges, then viable solutions, these will be discussed. So you can at least make 3 paragraph, considering a social angle, prevalency of the problem, then economic angle, which deals with the money and the repercussions on the economy and whatnot. Then the political angle, and by political I do not mean politics. By political means the political executive of the day. That means the steps and measures taken by the government in this regard. What has government done to improve or to fight the situation? Then solutions, if you have any, if you mention that, the next paragraph would be solutions, and then last paragraph should be a way forward, right? ना मैं 8 क्यों बोल रहा हूँ, मे बी अगर आपको लग रहा है कि सर सोशल में मुझे लगा कि एक पैराग्राफ में सारी चीजें नहीं आ पा रही थी, तो मैंने एक की बजाय 2 पैराग्राफ बना दिए. तो I ended up making 7 paragraphs or 8 paragraphs. That is perfectly all right. But I'm sorry guys, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है पिछले कुछ दिनों से because of the changing weather, transition of weather and everything. But guys, your aim should be to follow this structure every time. Without introduction, you cannot start your essay. Without conclusion, you cannot end your essay. Without different dimensions of the topic, you will not be able to do justice to your essay. Please remember that. अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो, and if you understand the format, from today onwards, you will start writing your essays in this format, in this manner. And please start doing it from today, because it takes some time getting used to this sort of articulation. I can give you this. एकदम से नहीं होता कि सर आपने बता दिया और क्लास के बाद हम बन गए शशि थरूर, है ना, कोई कर लो हमसे बात इंग्लिश में, देखते हैं हम जाने नहीं देंगे किसी को. It will not happen that way. It takes a little time, right? But a little time only. You'll get used to it probably in the second or third practice essay. You'll do, but you will get there. But याद रखना इस approach ये होनी चाहिए, because this is what we call universal articulation, or universal format of writing any articulation. You or just call it universal draft. Universal draft क्या होता है guys? Everything that you read, आपने पता नहीं consciously या subconsciously ये चीज notice की है या नहीं की है. Everything that you read out there, maybe even if it's an newspaper article, if it's an editorial, if it's a letter, if it's a report, if it's a memo, if it's a passage, whatever it is, if it's a story, if it's a movie, everything is written in this way. You always start with an introduction. कभी आप न्यूज़पेपर आर्टिकल देखना, उठा के आज देख लेना, पहला जो पैराग्राफ होता है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का, वो बहुत छोटा सा होता है कंपेयर टू द अदर, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन होती है अबाउट द न्यूज. फिर वो सेकंड पैराग्राफ से पूरी डिटेल में आना शुरू करता है. सेम विद योर लेटर. लेटर में पहले पैराग्राफ में हम क्या लिखते थे कि दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, right, that this letter has been written by for this reason.
तो वो इंट्रोडक्शन ही तो हुई है वो. So this is called a universal draft, guys. Editorial पढ़ लेना, कोई मूवी देख लेना, स्टोरी पढ़ लेना. स्टोरीज बचपन में याद है guys? Once upon a time. Once upon a time क्यों होता था? वही तो उसकी इंट्रोडक्शन है कि यार एक बार की बात है. वहीं से आप इमेजिनेशन में जाते हो, अच्छा ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है. तो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ले आउट द कारपेट, टू ओपन द कर्टन. तो ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये कभी मत भूलना. These are the key points of your essay, and we'll discuss that in detail. But has everyone understood, guys, whosoever is watching this session, कि why am I saying कि essay is never written in a one directional manner? It is always written in a multi-directional manner. I mean, you are discussing multi dimensions of the topic: social repercussions, social impact, social challenges, economic burden, economic impacts, economic consequences, then political steps and measures taken by the authorities or government or stakeholders, and then the viable solutions of the problem or challenges or repercussions if there are any, and then you give a way forward. On a positive note, you always end your essay on a positive note, giving a way forward, right? वहीं से आपकी पॉजिटिविटी नजर आएगी. सॉल्यूशन दिया है बच्चे ने और वे फॉरवर्ड भी दिया है कि if this is executed not just on paper but in reality, this will help make India prosperous and a united or integrated nation, and it will lead a path to uh, it will pave a path for a better future for our country, or let's say it will unleash the animal spirits of our economy, and we'll be able to reach our target of becoming a 7 trillion economy by 2030. So ये positive जो आपके way forwards हैं, ये हमें conclusion में देने होते हैं, right? So you start with the topic, you discuss it holistically, and then you finish it around. Introduction around 50-60 words is enough, Manu. Should we read some articles? Of course, Rajesh. देखो, unless you know something about the topic, what are you going to write about the topic? राजेश, मैं अभी आपको बोलता हूँ 600 वर्ड का या 400 वर्ड का फॉरेक्स रिजर्व्स पे कैसे लिख के दिखाओ मुझे. अगर आपको नहीं पता फॉरेक्स रिजर्व्स क्या है, उनके इंट्रिंसिक्स क्या है, कितनी वैल्यू है इंडिया की, will you be able to write an essay there? No, you will not. Right? So that is the point. So see, you need to research about the topic, you need to prepare, and once you have all the information, then comes the second part, your articulation, how you use that information, logically in a properly formatted manner to prove your thesis. Nahi Shivdat, I think you've joined late. The ideal target for your essay should be 400 words, not 600, not 350. I told you this is practically feasible and this is a good word limit. So even when the word limit used to be 300 words, I always used to say write 400 words, because that is the average, that is at least bare minimum word limit that you need to discuss a topic, at least. Because 200 word का essay लिखना, उसमें क्या ही लिखोगे यार आप. 300 word में या तो conclusion रह जाएगा या introduction अच्छा नहीं हो पाएगा. So 400 word is the ideal word limit for your essay in descriptive English, Shivdat. Okay. The guys who are watching the session on YouTube, I hope you're liking the session. So don't forget to like the thumbs up button. And if you feel that, okay, we also need this, come join us in our crash course and you can get benefited from this. लिखा तो यार FMN ESI में भी 600 वर्ड होता है शिवदत्त, वहां पे भी आप 600 वर्ड लिख के आओगे. जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनकी वर्ड लिमिट होती है 400, जो 6 मार्क्स के होते हैं उनकी वर्ड लिमिट होती है 600. डू यू थिंक आप वो पूरे कर पाओगे 90 मिनट्स में? Just you can just answer in yes or no. तो possible ही नहीं है, तो you're not going to skip one question. Am I right, Shivdat? तो skip तो करोगे ही नहीं है कोई भी question. Skip करोगे तो you are already out of the race. So तभी मैं बोल रहा हूँ, I've thought about this. 70% 600 का कितना हुआ? What 420? वही तो मैं कह रहा हूँ 420 यही टारगेट करो. Alright, so be realistic. See, guys, ये जो आपके सोचने वाला पार्ट है ना, सोचने वाली चीजें वो मैंने कर लिया आपके लिए, ठीक है. You don't have to do that. ये इसीलिए क्लास हो रही है, नहीं तो आप खुद पढ़ सकते हैं ना इस टाइम पे. ये 2 घंटे आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बट why are we here? Because I have done the research and everything that you need for this. तो वो मैं 400 words मैं वो वैसे नहीं बोल रहा कि सर कुछ भी बोल दिया सर ने और वो बन गया कि चलो सर ने बोला है तो नहीं. It is there because there's a lot of thought process that has went into it. कि why only 400 words? Why not 450? जब वर्ड लिमिट तो 350 है तो why not 450 और 500? बिकॉज यही प्रैक्टिकली फिजिबल है. बिकॉज 30 मार्क्स के लिए अगर आप 400 वर्ड्स यहाँ लिखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी तो आपको 400 से ज्यादा लिखने हैं, क्योंकि वहां पे 5 क्वेश्चन है और 80 वर्ड्स पर आंसर, दैट मींस 400 वर्ड्स. तो एक ऐसे वहां पे भी लिख रहे हो आप एक तरह से.
तो 400 वर्ड्स इन आरसी, 400 वर्ड्स इन एसे, 800, 150, 170 वर्ड्स फॉर रीडिंग फॉर योर प्रेसी. So you are writing around 1000 words there. So in 90 minutes, that is what you can reach up to. उससे ज्यादा नहीं हो पाता. 900 to 1000 words is the limit that one can write. Anyone can write. जिसमें you also have to read 2 passages. ठीक है, एक प्रेसी वाला और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला. तो वो टाइम भी डिडक्ट कर लो उसमें से. तो अगर आपकी एक एवरेज टाइपिंग स्पीड है 15 वर्ड्स पर मिनट, which anybody with, even if you're typing with index fingers, you'll be able to type 15 words per minute. ये सभी की एवरेज स्पीड होती है. So you don't need to be expert in typing, but even if you are typing for 60-65 minutes, you'll be able to reach 900-950 words. तो index finger से भी आप पेपर पूरा कर पाओगे. लेकिन the point is, जो आप लिखोगे, is it worth it? Is it, will it really fetch you good marks or not? That is the point. और वो कब होगा? जब आप वो प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे. और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप इंडेक्स फिंगर से टाइप नहीं करोगे. तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस दैट हैज गॉन इनटू दिस. कि व्हाई एम आई सेइंग 400 वर्ड्स? Why not 450 or 500 or 375? Right? So I've done the thinking part for you guys. Don't worry. ये कुछ गलत नहीं बता के जाऊंगा आपको, आपके बेनिफिट के लिए करके जाऊंगा जो बता के जाऊंगा. बट यस, आपके डाउट्स बिल्कुल फेयर है कि सर हम पेपर तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा है ना सर. एक साल तो हमारा है, आपका थोड़ी है. Am I right? तो that is also true. But at the end of the day, you have to put your trust somewhere. Right? चलो गाइस, तो ये था आपकी ऐसे की इंट्रोडक्शन के आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन दैट वी डू नॉट जस्ट राइट in depth knowledge of the topic, we write around the topic, we discuss different dimensions of the topic. Right? Now coming to the intrinsics of your essay. Now what is the evaluation criteria of this paper? Right? How will you be evaluated? Now before all this, ठीक है, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, your first aim is to complete your paper in time. Complete your answers while meeting the word limit. That is the first aim. और गाइस, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स. ठीक है, मैं इसलिए स्टार डाल के अलग से लिखा है. आई डिडंट वांट टू स्केयर यू. मैंने इसलिए यहाँ पे पीपीटी में, पीडीएफ में नहीं डाला इसको, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार हाँ हमारा एम तो बस कंप्लीट करना ही है. फिर इसका मतलब सर ने लिखा है ना कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करके आना है, चाहे कुछ भी लिखा हो. राइट? नहीं, दैट इज नॉट ट्रू. बट येस, योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम इज टू कंप्लीट योर पेपर इन टाइम while meeting the word limit. अगर आपने एक भी क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 5 में से एक क्वेश्चन अगर आपका छूट गया ना, you are out of the race because the competition is cutthroat guys. I'll not lie to you. I'll be very blunt because वो time नहीं है sugar coat करने का चीजों को अब. Right? So the competition is cutthroat, but yes, you are the competition. Please remember that. ठीक है? तो अपने आप competition में डालना है. तो first aim अपने time management के साथ अपना पेपर complete कर पाना is your first target. ठीक है? There is no way कि आपका पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है. ठीक है? That should not happen in your paper. आपके पास at least एंड में, और योर रियल टारगेट शुड बी, और वो होगा भी, देखना गाइस, इन लिटिल टाइम यू विल डू दैट. आपके पास एट द एंड ऑफ द डे 5-7 मिनट बच जाएंगे प्रूफ रीडिंग के बाद भी. तो दैट इज व्हेन यू कैन कॉल कि हाँ अब नाउ आई थिंक आई हैव इनफ बफर टाइम टू फाइट विद एनी any contingency that I can face there, any problem, any issue that I can face there. तो वो है जो आपको ध्यान रख के चलना है कि your first aim is to complete the answers while meeting the word limit. ठीक है? ये this should always be there in the back of your head. तो उसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, अपना वर्ड मैनेजमेंट करोगे कि पहले मुझे हर क्वेश्चन का टाइम सेट करना है और उसको मैनेज करना है. हर बार मुझे उसी टाइम लिमिट को स्टिक करना है. देन यू विल स्टिक विद योर वर्ड लिमिट कि मैंने जो सेट की है वर्ड लिमिट, जो सर ने बताई है, जो हमने दिखे कि अगर 170 है प्रेसी की वर्ड लिमिट तो इतना ही होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम. अगर ऐसे है तो 400 ही लिखना है, नॉट मोर नॉट लेस. मतलब हाँ 390 410 वो चलेगा, लेकिन अराउंड 400. सिमिलरली फॉर आरसी अगर बोला है कि 80 to 90 वर्ड्स लिखने तो उतने लिखने हैं, एंड विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम. वंस यू आर एबल टू डू दैट, देन वी विल कम टू दिस पार्ट कि अब आपके एक्चुअली में पेपर किस बेसिस पे इवैल्यूएट होते हैं. सो द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर योर पेपर, फॉर योर एग्जाम इज, फर्स्ट इज योर आर्टिकुलेशन. नाउ आफ्टर, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव कंप्लीटेड द पेपर, यू हैव डन एवरीथिंग दैट देयर वाज या दैट देयर वुड बी. राइट? आपने सभी जो आपने ऐसे लिखा है उसका आपने चॉइस नंबर भी लिखा है, आपने प्रेसी का भी टाइटल दिया है, उसको एक पैराग्राफ में लिखा है, आपने आरसी के भी सभी क्वेश्चंस के आंसर सही इलैबोरेट करके नंबर बाय नंबर लिख के दिए हैं. सो आई एम अज्यूमिंग आपने ये सब किया है. देन व्हाट विल कम इनटू प्ले? फर्स्ट योर आर्टिकुलेशन. व्हाट आई मीन बाय आर्टिकुलेशन इज
what do you write, not how do you write, what do you write there. What I mean is it should be coherent with the topic. अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल अमित, अगर आपको एक पोल्यूशन के ऊपर एक टॉपिक आ जाता है ऐसे में, अगर मैं वहां पे वही बचपन वाला पोल्यूशन वाला ऐसे लिखूंगा, 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, लैंड वाटर सॉइल, ठीक है, डू यू थिंक दैट विल फेयर वेल? Absolutely not. So your articulation will play a very, a huge role in this. Okay, how you articulate your ideas into your essay or into your answers, that will play a lot of role. So अब देखो वो वाला population pollution वाला वो वाला ऐसे तो अब नहीं चलने वाला. So obviously it has to be, a little refined. It has to be insightful. It has to be, it has to be, it should provide some details about the topic, the reality of the topic कि यार क्या हो क्या रहा है. अब मैं वो पोल्यूशन, एक तो वो पोल्यूशन वाला ऐसे, और एक दूसरे बच्चा लिख के आ रहा है कॉप 27 और कॉप ये सब वो मूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट एसडीजी गोल्स और एयर क्वालिटी इंडेक्स, किसको ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं? विंची obviously is the second one, sir. So I think we understood that now, right? So your articulation will come into play after your completion of your paper, कि आप कितना अच्छा articulate करके आते हो अपने ideas को, how well presented they are. Now second is your drafting skills. So what is drafting skills? Now this falls under your format, कि आप को जो फॉर्मेट क्लियरली पता है नहीं पता है. डू यू नो हाउ टू राइट अ प्रेसी, डू यू नो हाउ टू फ्रेम योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आंसर्स. उसमें भी वही चीज करनी पड़ेगी कि इंट्रोडक्शन लाइन होनी चाहिए, फिर पूरा डिस्कस करेंगे हम आंसर को, और फिर हम कंक्लूजन लाइन भी देंगे उसके अंदर. वो जब आप सीख जाओगे, दैट विल ऐड टू योर ड्राफ्टिंग स्किल्स. कि व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग एन आंसर, डू यू नो द इंट्रिंसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग, कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और मुझे सही तरह से एक सेट वर्ड लिमिट में, प्रेसी में जैसे मैं आपको समझाऊंगा इसके, अगर आपको क्लियरली पता होना चाहिए, इफ द वर्ड लिमिट इज 150, यू विल बी एबल टू राइट बिटवीन 12 to 15 सेंटेंसेस. अब उसमें आपको ये पता होना चाहिए, एक तो आपका टाइटल हो गया, एक आपका इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो गया, एक आपका कंक्लूजन सेंटेंस हो गया, बचे आपके पास रफली 10 सेंटेंसेस. तो अब आपको ये अपने प्रोपोर्शन ऑब्जर्व करने के लिए, टू ऑब्जर्व प्रोपोर्शन इन योर प्रेसी, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि यार वो 10 सेंटेंसेस है मेरे पास, तो उन 10 सेंटेंसेस में मुझे कौन से 10 पॉइंट्स डालने हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है और कौन सी नहीं डालनी है. वंस यू टेक दैट अप्रोच, दैट विल एड अप टू योर ड्राफ्टिंग स्किल्स, कि यू आर ऑब्जर्विंग प्रोपोर्शन वेरी लॉजिकली. ठीक है, और वो जब आप अप्रोच लेके जाओगे, दैट इज व्हेन यू कैन कॉल योरसेल्फ के फुली प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, एंड यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट. ठीक है. So articulation, what you write. Drafting, how you write. So articulation is what are you writing. Drafting skills, how are you writing it? Is it in format, is it in proper structure or not? Third, language and vocabulary. What are you using? I mean, the language that you use. Guys, students ask me, sir, will writing very good vocabulary fetch good marks? Not necessarily true. If your answer is not coherent, if your answer is not to the point, there is no point writing, there's no point becoming Shakespeare out there, right? Your answer has to be coherent, even if a simple answer, even if it's a simple sentence, simple answer, but it pertains to the to the requirement of the question, it will fetch very good marks. तो ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 2019 में हुआ था मेरे साथ. The topper of RBI, rank 1, I had an opportunity to speak with the aspirant, and when I asked him one-on-one, when I asked him, guys, what did you do in your essay? What did he tell me? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपना जो फैक्ट्स एंड डेटा जो मैंने तैयार किए थे, मैंने ऐसे टॉपिक जो आया था, मैंने उस पर शुरू किया एक बैकग्राउंड डेटा से. फिर मैंने हर पैराग्राफ में क्या किया, मैं फर्स्ट सेंटेंस में एक फैक्ट लिखता, एक डेटा लिखता, और नेक्स्ट सेंटेंस में मैं उसको टॉपिक से कनेक्ट कर देता. मैंने गिव मी एन एग्जांपल. उसने बोला सर, जैसे मैंने लिखा कि सिंस 75 years द डेवलपमेंट, द ग्रोथ, मतलब जो चार्ट है इंडिया का, मतलब जीडीपी का, दैट हैज बीन क्वाइट स्लो और क्वाइट शॉर्ट. जो उसका ग्राफ है वेरी लो कंपेयर टू 21st सेंचुरी. तो पिछली सेंचुरी में बहुत कम था, इस सेंचुरी में बहुत ज्यादा है, ये मैंने लिखा. और फिर मैंने अगला पॉइंट क्या बना दिया, दिस शोज दैट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस टेक्नोलॉजी हैज पेव्ड अ वे फॉर द फ्यूचर फॉर इंडिया. तो मैंने एक फैक्ट लिखा, अगला सेंटेंस मैंने उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया. फिर मैंने एक रिपोर्ट लिखी, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, this many people have been brought under the umbrella of, or let's say the gamut of, let's say education sector or higher education in the last 20, 20, 30 years. ये लिखा, रिपोर्ट लिखी, फिर अगला सेंटेंस उसका फिर कनेक्ट कर दिया कि दिस शोज और दिस प्रूव्स दैट एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड द आउटपुट प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री. यूं कर करके मैंने सारे ऐसे बनाया अपना 350-400 वर्ड्स का, एंड आई वाज एबल टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल.
और ये मैं आपको ऑनेस्टली वही वर्डिंग्स बता रहा हूँ जो स्टूडेंट ने मुझे बताई थी, AIR रैंक 1। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली, इसलिए मैं हमेशा से क्या मेंशन करता हूँ गाइस, these 5 things will be the backbone of your essay: facts, data, statistics, reports, and schemes. If you know these 5 things about the topic, right, and if you are able to present them in your essay, there can be nothing better than that. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी नहीं है ना, you'll still be able to score very good marks, excellent marks out there, just with the help of these 5 things. So your language and vocabulary will play some role, but up till where, where your language is, understandable and there is no error in it. So your language and your vocabulary should be decent. It should not be very high, it should not be very poor, it should be decent. एक graduate level student का जो होता है वो होना चाहिए, but it will not be the core of your content. Your content at the end of the day will fetch you the the final marks. Then structure, you should know the structure of all the answers by heart. You should know the how to write an essay, how to frame it. Your grammatical conciseness is very important, you know this. And typos and errors, guys, please remember, this is not actually told anywhere on the open platform, public platform, but for every mistake you will lose 0.25 marks. Be it a grammatical error, be it a typo, be it a spelling error, or be it a punctuation error. Every mistake will cost you 0.25 marks. So let's say if you've made 5 mistakes or 10 mistakes in your essay, you're already behind 2.5 marks. Now, similarly, if you keep on doing that in your Press C and in your RC, you'll always lag behind. So then you can ask yourself, where did I go behind? I did write very well, but why was I not able to score very well? Then you start second questioning, then you start doubting your ability, that am I able to do it, am I worth it or not? See, फिर वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं. And I always tell them कि if you write just plain English but logical answers, coherent and informative, ठीक है, अगर वो फॉर्मेट में है, you'll score the best marks possible. लेकिन your answer should be grammatically apt, राइट, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए. स्पेलिंग एरर हो रहे हैं वहां पे, वो सब नहीं चलेगा. Somebody was asking me earlier कि सर आर्टिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, तब उसी का मैं आउटकम आपको ही बता रहा था. What is the out, what is the way out? If you use facts and data, statistics, reports and schemes, you won't be required to write a lot of articles. You won't be required to create fancy sentences out there. Am I right, Amit? If your essay is just informative, if it's factual, if it hits the right target, right, and what the the reader wants to see, he knows that you'll be able to do it. And if the rest of the sentences are error free, that does it for him, right? You'll score the best marks possible. So these are the criteria of your evaluation of your paper. Got it? Now, what are the salient features of an essay? Because if you ask me, students do ask me, sir, what should we focus upon? We do know a little about essay writing, but what do you think are the salient features of an essay? Excellent presentation, right? What I mean by presentation is when you are discussing a topic, it should be discussed holistically. Important facts, I told you, very important, relevant to the topic. Important data and statistics that you will prepare from the fodder material that has been provided to you in your course. So from today onwards, guys, you'll start reading, start covering your fodder material. Every day, you'll have to cover 3 to 4 topics every day. And that is when you can call yourself that we are on the right track. And by the time we approach the exam, we appear in the exam, we'll be ready, we'll be done with 60, 70, 80 topics. And that will serve you right. Important schemes that have been launched in the last 2 years, particularly, and in the last 5, 7, 8 years in the long term. For example, Manrega, Aadhaar Yojana, right? This is obviously useful, but the recent schemes are very impactful, right? What is going on in the recent past? So that will be more impactful. But even if you still mention, the let's say the Aadhaar Yojana or demonetization, or let's say if you mention the new GST regime, or let's say the or let's say whatever, Jandan Yojana, direct benefit transfer, if you're talking about UPI, so the soon the more schemes that you'll be able to present there, the better it is going to get. So these 3 things can be called the backbone of your essay, guys. Important facts, important data, important statistics, important schemes, and valid and relevant examples, right? Now if you are able to present these 4, 5 things in your essay, now you'll fare very well, unless you choose the static topic. अब देखो guys, अगर आपने static topic choose किया है,
then it will all depend upon your articulation. जैसे वो टॉपिक था कि peace cannot be achieved through war, it can only be achieved through understanding. अगर आप वो टॉपिक चूज करके लिख रहे हो, then it's all about your narration, कि आप कैसा वहां पे आप एक ना इमोशनल और लेट्स से एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सा आप एक सिनेरियो क्रिएट करते हो रीडर के लिए. दैट विल डिपेंड. बट गाइज एट द एंड ऑफ द डे, राइट, ऑलवेज रिमेंबर कि उस टॉपिक पे बहुत हाई स्कोर करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है. बिकॉज मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दैट एसे. सोचो आपको अभी अगर वो एसे लिखना हो, peace cannot be achieved through understanding, it can only be achieved it can only be sorry it cannot be achieved through war, it can only be achieved through understanding. सोचो अभी आपको 400 वर्ड लिखने हो, कितना टाइम लग जाएगा उसका रफ ड्राफ्ट बनाने में, कितना टाइम लग जाएगा उसको एग्जीक्यूट करने में, राइट. इंस्टेड ऑन द अदर हैंड, अगर मैं वही टॉपिक यूपीआई के ऊपर लिख रहा होता, आई थिंक आई वुड हैव कंप्लीटेड फेयरली सूनर एंड आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर. तो ये चॉइस वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये लग रहा है, देखो वो चॉइस कब होनी चाहिए, अगर आपको ये लग रहा है कि सर सारे टॉपिक ही मेरे को नहीं आते थे, इन दैट सिनेरियो गो फॉर द नैरेटिव टॉपिक जिसमें हम नरेट करते हैं. Yes, Sandeep, it is in the in descriptive English part itself. So अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई भी टॉपिक मेरे काम करनी है, then choose the narrative topic. फिर तो आपको मजबूरी में वही करना पड़ेगा, right? But if you go prepared, then there will be two or more than two topics which you will find easy and you will find informative. कि यार ये informative टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए. तो मैं क्या बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव और ये नैरेटिव टॉपिक्स की, अब उनको डिस्कस करते हैं. ठीक है कि सर ये अलग अलग टाइप्स होते हैं क्या एस्से के. तो लिसन टू दिस गाइस एंड दिस विल हेल्प यू, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एसेज are you going to face or are you going to write in your paper. So there are basically 4 types of essays that we face or we write or we see in our day-to-day lives, and let me put them down for you. Number 1, argumentative. Number 2, expository. Number 3, narrative. And number 4, descriptive. And the name speaks everything about the topic itself. Argumentative. What is argument? Vinci, what is argument? Pros and cons, right? To and fro, right? Positive and negative. So argumentative topics are topics where you are asked to discuss a topic from both the angles. उसके पॉजिटिव भी बताने हैं, उसके नेगेटिव भी बताने हैं, प्रोज भी बताने हैं, कॉन्स भी बताने हैं, गुड्स भी बताने हैं, बैड्स भी बताने हैं. सो सच टॉपिक्स आर कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स. तो इनमें आपकी क्या स्किल टेस्ट की जाती है? चलो पहले मैं एग्जांपल बता दूं. फॉर एग्जांपल, जैसे हैज द राइज ऑफ इंटरनेट हैड अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एजुकेशन, राइट? फेयर टॉपिक है. अब इसमें दोनों चीजें बनती हैं. ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बेनिफिट्स भी बहुत है, फार रीचिंग एरियाज, ठीक है, चीपर कॉस्ट, easier to use, subjectivity, relevance, right? It will help you to develop your skills, what not. But negative भी बहुत सारे हैं. फिजिकल इम्पैक्ट्स हैं, राइट, उसमें स्कैम्स हैं, उसमें प्रॉब्लम और आउटरीच प्रोग्राम ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, राइट, किसी अफोर्डेबिलिटी का इशू है. सो नेगेटिव भी है उसके, उससे बहुत गलत चीजें भी सीखते हैं, उसमें बहुत सारे फेक न्यूज भी होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है, इससे बहुत ज्यादा डाइवर्जन भी होता है, फिजिकल ग्रोथ में भी और मेंटल ग्रोथ में भी बहुत एक चैलेंज बनता है. तो दोनों चीजें हैं, राइट. सो सच अ टॉपिक इज कॉल्ड एन आर्गुमेंटेटिव टॉपिक. तो अब इसमें क्या स्किल्स टेस्ट होती हैं? नाउ इन सच अ टॉपिक you have to form an opinion via research. कि देखो मैं सिर्फ यही तो नहीं लिख सकता ना इंटरनेट अच्छा है क्योंकि सबको मिलता है, इसमें कुछ भी देख सकते हो, ऐसे नहीं लिख पाऊंगा मैं, राइट? तो इट हैज टू बी इंफॉर्मेटिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख रहे हैं ना, तो इट हैज टू बी बेस्ड ऑन योर रिसर्च. अब क्या कह रहे हो, उसका इम्पैक्ट कितना है उसका, राइट? तो इट हैज टू बी रिसर्च बेस्ड एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट. कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है इट हैज टू बी एविडेंस बेस्ड, कि आप जो फैक्ट्स एंड डेटा प्रेजेंट कर रहे हो. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन, इज इट गुड और बैड फॉर आवर कंट्री? अब बताओ कैसा टॉपिक है ये? आर्गुमेंटेटिव. ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स बहुत है, काउंटलेस बेनिफिट्स, बट एट द सेम टाइम उसके नेगेटिव्स भी बहुत है, चैलेंजेस भी बहुत है, उसके आउटकम्स भी बहुत पुअर है, राइट? एफडीआई, यस अमित, एफडीआई, इज इट गुड फॉर अ कंट्री और इज इट बैड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री? ओपिनियन नहीं देना गाइस. अगर आपको ये लगने लग रहा है ना कि वो मुझसे मेरा ओपिनियन मांग रहा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. वहां पे ओपिनियन नहीं देना है. इट हैज टू बी बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि सर हाँ, डेवलपिंग कंट्री में एफडीआई अच्छा भी होता है, यस, बिकॉज इट प्रोवाइड्स योर एम्प्लॉयमेंट, it generates more opportunities, it brings global standard of products, it improves the GDP growth rate, forex reserves, what not. But negative भी बहुत है, middleman खत्म हो जाता है,
ठीक है, उसके बाद हमारी उसका मोनोपोली होना शुरू हो जाता है। मोनोपोलाइजेशन का एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे अगर वॉलमार्ट इंडिया में आता है एंड इफ इट ऑफर्स प्रोडक्ट्स एट वेरी चीप प्राइसेस, ऑब्वियसली इट विल लीड टू डिसरप्शन ऑफ चेन्स, ऑफ मार्केट्स, ऑफ मिडल मैन, और बहुत सारी नेगेटिव्स भी हैं उसके। ठीक है, वो उसमें मोनोपोलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, जैसे अमेजोन आया या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आई है। जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे ओला या उबर आए पहले, ये जो अपना था लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, जिसको हम कैब इंडस्ट्री बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ये ऑर्गेनाइज नहीं थी। बट सिंस ओला एंड उबर केम, दे बिकेम अ लॉट ऑर्गेनाइज्ड, राइट। ऑनर्स बैठे हैं यूएस में, बिग डेटा हमारे यूज कर रहे हैं, राइट, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके हम हमसे ही वो पैसे भी अर्न कर रहे हैं, राइट। उसके बेनिफिट्स भी बहुत है, हमें टाइम पे कैब मिलती है, कैंसलेशन है, ऑनलाइन सब कुछ उसका ट्रेसेबल है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। क्या कि भाई जो पहले जो जो कैब वाले थे, अब वो कहाँ जाएंगे, अब उनका क्या होगा, पहला वो चीज। दूसरा, एक बार मोनोपोलाइजेशन हो गया, यू हैव नो अदर ऑप्शन, रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे हैं, राइट। एंड आफ्टर मोनोपोलाइजेशन देन दे कैन चूज एनी टैरिफ दैट दे वांट, तो उसमें कोई मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ही तो है डिस्कस करने वाले इसमें। सो इट इज ओपिनियन, सो मतलब रिसर्च बेस्ड होना चाहिए आपके एसेस, इट शुड नॉट बी योर बायस्ड और इट शुड नॉट बी योर ओपिनियन बेस्ड। ऐसे अपना बायस, अपनी फीलिंग नहीं डालनी है वहां पे। मान लो कल को आपको 3 फार्म लॉज की बात करनी है, आपको 3 फार्म लॉज कैसे लगे, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो फार्म लॉज क्या थे, उनका इंटेंट क्या था, उनका आउटकम क्या हुआ और फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, दैट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन योर एसे, राइट। अपना ओपिनियन अपने घर रख के छोड़ के जाना है हमने, ये याद रखना है गाइस। अगर आपकी इंटेंशन, आपको कहने का मन है ना, ज्वाइन पॉलिटिक्स, ठीक है, आरबीआई इज नॉट फॉर यू। तो अगर आपको आरबीआई ज्वाइन करना है, यू हैव टू बी लॉजिकल अबाउट इट, ना, आई बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, कि सर कर नहीं सकते, क्या कर सकते हो, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे, पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे वही है। ठीक है, बिकॉज देखो, अगर आप एक इंक्लाइंड होकर लिखते हो किसी भी टूवर्ड्स प्रो गवर्नमेंट और अगेंस्ट गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट शोज कि आप एक्सट्रीम हो, यू आर नॉट डिप्लोमेटिक इन योर एटीट्यूड। और एक पब्लिक सर्विस जॉब में यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक इन योर एटीट्यूड, यू नीड टू बी वाइज इन योर डिसीजंस, कि आप एक चीज देख के नहीं चल रहे हो, ठीक है, बाइज्ड होके नहीं चल रहे हो, उसमें बहुत सारी और चीजें दैट कम इनटू प्ले, राइट। सो द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ टॉपिक इज आर्गुमेंटेटिव टॉपिक। सेकंड टॉपिक एक्सपोजिटरी, एक्सपोज करना क्या होता है उदित, व्हेन यू एक्सपोज, किसी को एक्सपोज किया जाता है जब उसका खुलासा किया जाता है, तो व्हेन यू आर बेसिकली सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेनिंग द टॉपिक टू द इवैल्यूएटर, जहां पे आपको एक वन डायरेक्शन में लिखना होता है टॉपिक, लेकिन यू आर एक्सप्लेनिंग ऑल द डायमेंशंस ऑफ अ टॉपिक। एग्जांपल देखना, एक्सप्लेन हाउ द इंसेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड। ऑब्वियसली इसमें कोई प्रोज एंड कॉन्स तो नहीं है, इसमें गुड्स और बैड्स नहीं बताने, इसमें एक डायरेक्शन में लिखना है कि बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, हाउ इट इज रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। सो दिस इज वन डायरेक्शन से, बट क्या इसमें सिर्फ हम बेनिफिट्स लिखते चलेंगे? नो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या होना चाहिए, इसमें एक्सपोज करना है टॉपिक को। तो शुरू करेंगे क्या, हम पास से शुरू करेंगे, बैकग्राउंड से, हम क्या थे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोबेबली स्टोन एज, कि हम कहाँ हम पत्ते ओढ़ के और गुफाओं में रहते थे, वेयर देन मतलब फर्दर मोर देन we invented wheel, we invented after wheel we invented fire, and then we started gradually started living together in colonies, right, we started civilizations, we started trade, and then we see the future of today. Then you bring it to the future, मतलब introduction में ऐसे शुरू किया, then all this has been possible because of technology, राइट। देन उसको सोशल एंगल में लेके आओ कि सोसाइटी में टेक्नोलॉजी ने क्या क्या रोल प्ले किया है। इट हैज बीन लेड आउट फॉर यू at every nook and corner of your life, right, at every step you use technology, ranging from this to this, right. So we have become dependent on technology, and it has made our lives easier. Then second paragraph, uska economic benefits kya hai, इकोनॉमी में कितना उसने, और लेट्स से हाउ इट हैज हेल्प टू बिकम अ न्यू वर्टिकल इन इटसेल्फ, ठीक है, न्यू सेक्टर बन के उभरा है टेक्नोलॉजी, right. Then third paragraph, you also discuss challenges technology has brought with it, right, nuclear power, this and that, blah blah blah, terrorism, ये वो, तो वो सब भी डिस्कस होगा वहां पे। then you will see कि गवर्नमेंट ने क्या किया है टेक्नोलॉजी को पुश करने के लिए इन द कंट्री, right, and then you will give viable solutions to those problems, and then you give a way forward। या टेक्नोलॉजी को अगर आप देखो, ये है राइट अप्रोच एक ऐसे को लिखने का। now what were
यू थिंकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? बच्चा पता है क्या कर देता है कई बार, पहले वो कंप्यूटर वाली लिख देगा, कंप्यूटर में कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर साइंस में लिख देगा हम स्पेस में भी चले गए, हमने ये भी कर दिया, फिर दवाई में लिख देगा हमने दवाइयों में भी ये कर लिया, फिर वो ये लिख देगा कि हमने रोड ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग में भी ये टेक्नोलॉजी कर ली, फिर वो अपनी डे टू डे लाइफ में भी लिख देगा, सारे बेनिफिट्स लिख देगा पॉइंट बाय पॉइंट, और फिर उसको खत्म कर देगा ऐसे वो, और लगेगा कि यार मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस तो कर दिया। नहीं, you have to discuss every angle that there is related to the topic. समझ रहे हो? To write a holistic essay, and that is what you should aspire to, you should aim for. Holistic essay लिखने के लिए you need to discuss different aspects of the topic. So expository topic में आपको क्या skills test होते हैं? Your knowledge of a topic, कि आप कितना जानते हो सच में टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट? अब आप उसको इकोनॉमी में लिखोगे तो यूएनडीसी, कैशलेस इकोनॉमी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉर्मल इकोनॉमी, वो सब भी मेंशन करोगे वहां पर, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? तो नॉलेज अबाउट अ टॉपिक एंड देन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट जस्ट द नॉलेज कि मुझे ये तो पता है कि बैंकिंग सेक्टर में पहले लेजर्स होते थे, फिर कंप्यूटर आ गए, और जब से कंप्यूटर आए, द जॉब द टास्क हैज बिकम वेरी इजी, एम आई राइट? The recording and the cloud system and computing and everything has made it very easy. But अगर आप उसको communicate नहीं कर पाए properly, सिर्फ ये लिख गए कि instead of ledger books we are now using computers to keep track of accounts, savings accounts, ये कोई information नहीं है, ये तो सबको पता है, ये तो बच्चे को पता है यार। आप वहां पे क्या इनपुट डाल रहे हो उसमें, दैट इज द पॉइंट। सो यू नीड टू प्रेजेंट योर नॉलेज ऑफ द टॉपिक वेरी क्लियरली, वेरी in a very presentable manner. So second type of topics are expository, where you expose a topic in one direction, या तो उसके बेनिफिट ही बता रहे हो या उसके प्रॉब्लम्स ही बता रहे हो, बट देन स्टिल यू डिस्कस द टॉपिक होलिस्टिकली। ये जो दो टाइप्स है ना गाइस, दीज आर यूज्ड फॉर योर फैक्चुअल टॉपिक्स, जो हम अभी डिस्कस किए थे ना हमने, फैक्चुअल टॉपिक्स जिसमें हम फैक्ट्स, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स, स्कीम्स, ये हम मेंशन कर पाते हैं। दीज आर दोज टू टॉपिक्स, एक्सपोजिटरी एंड आर्गुमेंटेटिव, ठीक है? देन कम्स द नेक्स्ट टू टाइप्स, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। अब नैरेटिव टॉपिक्स क्या होते हैं गाइस और डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं? ये होते हैं आपके जो हम जेनेरिक या स्टैटिक टॉपिक्स के लिए यूज करते हैं। याद है वो वाला जो हमने किया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या पीस कैन नॉट बी अचीव थ्रू वॉर, इट कैन बी अचीव थ्रू अंडरस्टैंडिंग, वो इनमें आते हैं। अब दोज टॉपिक्स आर कॉल्ड नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। नाउ नैरेटिव टॉपिक्स वेयर क्रिएटिव लैंग्वेज यूज इज रिक्वायर्ड। पहले एग्जांपल देखते हैं, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? अब इसमें कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आई थिंक नहीं आएगा विंची, कोई इसमें डेटा, रिपोर्ट, स्कीम कुछ नहीं आएगा, इसमें सारा आपने अपने उस पर लिखना है, अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक पे लिखना है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर? योर क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, राइट? वेयर यूल बी कैसे शुरू करेंगे हम कम्युनिकेशन स्किल्स को? अमित जस्ट थिंक ऑफ इट, आउट ऑफ जस्ट सोच के देखो, अगर आप पेपर में बैठे हो और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ऐसे आ जाता है, कैसे शुरू करोगे आप? What about it, Akhil? 67 is, it's a decent score, but highest I told, highest is 79. तो कैसे शुरू करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का? अगर मैं करता ना तो मैं बोलता, मैं अगर शुरू करता, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो, बिकॉज देखो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिव लैंग्वेज। कोटेशन शुरू करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, कोई कोट है राहुल, पता है आपको? अभी गूगल करके, वहां गूगल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो अगर कोई है तो बताओ मुझे, मैं यही पूछ रहा हूँ कैसे शुरू करते हैं। क्लैरिटी ऑन व्हाट एक्चुअली इज कम्युनिकेशन। संदीपन, ये तो हमें शायद बॉडी में डिस्कस नहीं करना चाहिए संदीपन, बट what communication is, I think that should be discussed in the body, defining communication and how it's important in daily lives, ये भी body का ही part है जयंत। I think I would start with, the only thing that separates human beings and puts us on the top of the food chain or top of the ecosystem is our ability to rationally communicate and understand each other. And the best outcome and the best let's say invention that we may have done so far is to communicate with each other in a proper manner. Don't you think that is the better way of opening the curtain for the reader? कि हाँ यार, बैकग्राउंड से शुरू करो भाई, इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, इट इज द की टू सक्सेस, टुडेज वर्ल्ड में कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सब बॉडी का पार्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइज यू हैव टू थिंक अबाउट इट, और यही चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो फॉर्डर मटेरियल। और गाइज
अगर आपको ऐसे एसेस पढ़ने हैं तो अब आपके इस वाले कोर्स में तो आई एम नॉट श्योर, बट जो मेन जो आपका गोल्ड पैकेज है उन स्टूडेंट्स को हमने, ठीक है, गोल्ड पैकेज में मैंने पर्टिकुलरली आई हैव गिवन अराउंड 50-60 ये वाले एसेस जो स्टैटिक एसेस होते हैं ना, ये वाले एसेस मैंने दिए हुए हैं। इफ यू वांट मैं आपको आज वाले लेक्चर के साथ वो वाले एसेस के पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। आई गेट द पीडीएफ अपलोडेड, यू कैन रीड दोज एसेस, उनको पढ़ना है सिर्फ। एक ये समझना है कि मान लो फीमेल फीटिसाइड के ऊपर अगर कोई ऐसे आता है, राइट, तो उसकी ओपनिंग कैसी सी होनी चाहिए। अब एक तो मैं खुद सोचूं बैठ के वहां पे, आई मे और मे नॉट गेट द राइट अप्रोच, लेकिन अगर आपको एक अप्रोच पहले से मिल रही है देन यू कैन डिसाइड, हाँ यार ये अप्रोच भी तो सही है। आपको लगा सुन के हाँ सर ये वाला सही था आपने जो बताया कि यार हाँ जानवरों से अलग हमें टॉप टॉप फूड चेन पे कौन बिठाता है, हमारी रैशनैलिटी, वी आर आल्सो एनिमल्स, राइट, बट व्हाट मेक्स अस सोशल एनिमल्स, right? The only thing that separates us from animals is our ability to communicate and use our limbs, right? So using our limbs that can be done by many others, but communication is the unique aspect of our of our animal kingdom, right? So this is what you get when you read others essays. तो सैंपल essays बहुत पढ़ा करो गाइस। अगर आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे और रैंडमली भी मिल जाएंगे। जस्ट गो ऑनलाइन गूगल सर्च के टॉप 100 essays या गुड essays for UPSC or for RBI, you get many, just read them, ओपनिंग उनका पढ़ के जाओ सभी का कि यार कल को अगर मुझे इनमें से कोई अगर कोई ऐसे टॉपिक आ जाते तो क्या उनमें से कोई ओपनिंग में यूज कर सकता हूँ। And you know how I got this? When I was in school, one of my seniors taught me this. कि यार एक ओपनिंग बना लो हमेशा ना जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में फिट बैठ जाए। तो मैंने सोचा यार ऐसी कोई ओपनिंग हो ही नहीं सकती। तो देन शी टोल्ड मी कि जस्ट लिसन टू दिस, ठीक है। उन्होंने मुझे ओपनिंग बताई और ओपनिंग कुछ ऐसी थी कि एजुकेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंजम्पशन, education is the most valuable consumption in the world today, and good that there is, because it immeasurably enriches the lives of those it touches। ठीक है, अब ये उसने उन्होंने मुझे एक ओपनिंग बता दी कि इससे शुरू करो, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। यस, अगर तो एजुकेशन की जगह आप यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी डाल सकते हो। टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंजम्पशन इन टुडेज वर्ल्ड, एंड गुड दैट देयर इज बिकॉज इट इमेजरेबली एनरिचेस द लाइव्स ऑफ दोज इट टचेस। हो गया, मैंने वर्ड चेंज किया, मेरी अच्छी ओपनिंग बन गई। सो स्मार्ट अप्रोच लेके जाओगे इस एग्जाम में। यू कैन नॉट जस्ट बी, आई टोल्ड यू, यू आर नॉट शेक्सपियर एंड यू डोंट हैव टू बी कि वहां बैठ के मैंने कविता लिख डाली, वो करना नहीं है ना। यू हैव टू बी स्मार्ट। सो प्लीज क्रिएट दोज ओपनिंग्स, कीप देम विद यू, अपने पास रखो सेव करके कि यार ऐसा टॉपिक होगा ना तो मैं ऐसी ओपनिंग से शुरू कर सकता हूँ। सो दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी फॉर दिस। यस, आई गेट इट अपलोडेड नंदा, आई गेट इट डन, राइट। कम्युनिकेशन इज ऑफन नहीं नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है संदीपन। कम्युनिकेशन इज नेवर मिस इंटरप्रेटेड एज इंग्लिश। कम्युनिकेशन इज, द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू is to be able to exchange information and messages with each other in any way possible। communication बहुत तरह की होती है, it's not just verbal or written, it's gesture वाली भी होती है, बहुत सारी तरह की होती है। तो नहीं, मतलब ओपनिंग होनी चाहिए ब्रॉड एस्पेक्ट में संदीपन। जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना टॉपिक पे, तो आपको वो ऐसी ओपनिंग होनी चाहिए कि वो हर इंसान को हिट करे, anybody who reads it, am I right? तो वो एक peculiar point को लेके नहीं बनाई जाती कभी भी, वो broader context को, background को लेके decide की जाती है, right? So third type of essay is your narrative essay, where you would be required to present creative use of language and present a compelling narrative। तो ये जब मैंने आपको बात बोली ये फूड चेन वाली और इकोसिस्टम वाली, डिड इट सीम लाइक अ कंपेलिंग नैरेटिव? हाँ सर, बड़ा सही ओपनिंग डाल दिया आपने। फिर मैं धीरे धीरे उसको कहाँ ब्रश अप कर पाऊंगा कि कम्युनिकेशन लेड टू दिस, right, led to trade, led to this, and led to whatnot, and now we are able to, now we have more than this many languages, and communication is the key to grow in today's world। फिर मैंने सेकंड में शुरू किया कि how communication is the key to to live, respond and understand, and then communicate properly। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बता दिए थोड़ा बहुत उसमें, और उसमें बता दिया कि हाउ इट हेल्प्स यू इन योर डे टू डे लाइफ। फिर मैंने चैलेंजेस डिस्कस किए कि हाउ पुअर कम्युनिकेशन इज कैन बी डेरोगेटरी for your future, or can be unproductive for your for your life। then how do you how do you misread messages, or how do you misread communication, वो होना चाहिए। then how does communication help you build up your repo and your customer base and your services if you are in this industry। वो मैनेजमेंट वाला एंगल भी लेके आऊंगा मैं कि कॉर्पोरेट ऑफिस में कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, इट टेक्स यू इट टेक्स वंडर्स
takes you to heights that you cannot expect if you're a good communicator, right? If you're a good orator, right? Because you're able to communicate well, you become a part of a team, you can become a good leader, you become a good manager, and then you grow. तो एक सिंपल कम्युनिकेशन स्किल से आप ये सब अचीव करते हो, वो एंगल भी लेके आऊंगा उसमें मैं. देन आई विल गिव कि आपको इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड देन आई विल गिव अस फाइनल कंक्लूजन फॉर दैट. सो you have to be creative and you need to experience all these types of essays before you walk into the exam. And four type of essays: descriptive, guys. Now in descriptive essays, again your creative language is required, but descriptive में वो नहीं होता कि आपको एक कंपेलिंग नैरेटिव क्रिएट करना है. इसमें आपको थोड़ा सा ओपिनियन बेस्ड रखना होता है कि जैसे अब ये बहुत कम आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में, इस पेपर में नहीं आते बट आपके यूपीएससी में आ जाते हैं. ठीक है, यूपीएससी में जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड. अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था किसी ने, तो अब ये अगर आपको ये कोटेशन ही नहीं सुनी ना, जिसने करके दिखा दो, ये ऐसे लिख के दिखा दो, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, ठीक है, रूल्स द वर्ल्ड. क्या कहता है ये कोटेशन? कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है कि भाई जो फीमेल्स, मतलब माँ जो एक होती है जो बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, ठीक है, वही दुनिया को चलाती है. शी इज द रियल पावर होल्डर. अब इस पे अगर आप अपना ओपिनियन लिखो, इफ यू आर अ मैसोचिस्ट, इफ यू हैव दैट माइंडसेट कि नहीं भाई फीमेल कैसे उठाती हैं, अब लिख के दिखा दो ये ऐसे 1200 वर्ड का, 3 घंटे में खत्म करके दिखा दो. अब मुझे नहीं हो पाएगा. So see, this is what the point is. If you are able to create a narrative there, right? But descriptive इसमें कम आते हैं, but you should still know कि जैसे write your opinion on nationalism versus globalization. देखो nationalism अपनी जगह बहुत अच्छा है, उसमें भी आपको sensory details डालनी पड़ेंगी, देश प्रेम, your patriotism and what not. Then your other thing, globalization will also come into play. कि growth चाहिए तो फिर globalization भी जरूरी है, global standard जरूरी है, interconnected होना जरूरी है. तो दोनों चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी. सो क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्क्राइबिंग सेंसरी डिटेल्स बोथ आर रिक्वायर्ड इन दिस, बट ये कम आते हैं आपके पेपर में. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज यू गेट दीज 3 टाइप्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, expository, argumentative and narrative topics in your exam. So we'll be looking at these 3 types in our preparation this time. I mean in these sessions. Descriptive, they're usually not there. Narrative, yes, for example, prevention is better than cure, that's a narrative topic, right? Or peace can peace can only be achieved through understanding, it cannot be achieved through war. This is a narrative topic, right? So you're discussing and you're presenting a compelling narrative there. So narrative create करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, but it is also, मान लो वहां पे ऐसे टॉपिक्स आ जाए, मान लो इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, राइट, और आपको लग रहा है वहां पे फिनटेक के ऊपर आ गया, मान लो, और फिनटेक आपने पता ही नहीं यार फिनटेक में हो क्या रहा है, राइट? तो अब आप क्या करोगे विंशी? व्हाट इज द वे आउट? अब वो नैरेटिव वाला लिखना पड़ेगा, बट यू शुड बी वेल वर्स टू डू दैट एज वेल. यही गेम है इसका, कि वही वो देखना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए व्हेन यू आर अंडर प्रेशर, हाउ विल यू परफॉर्म, और वही वो देख के आपको सेलेक्ट करता है और आपको स्कोर करता है. ये याद रखना गाइस, ठीक है? सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एसेस दैट यू कैन फेस इन द एग्जाम. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्राफ्ट एन एसे. अब वो शुरू करते हैं. सर अब तक वो शुरू नहीं हुआ था क्या? 2 घंटे हो गए अभी तक. गाइस तब यही डिफरेंस है नॉर्मल यूट्यूब सेशंस का और इस कोर्स का. कोर्स के अंदर यू गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स, यू गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द टॉपिक, द कॉन्सेप्ट इनसाइड आउट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट to understand how to draft an essay. So there are 4 steps to write a good essay: choose, plan, outline and execute. ठीक है, now the approach is CPOE. First of all, choose your topic wisely. That is very very important guys. मैंने जो कल मैं बता रहा था, let me give you an example guys. Let's assume that you were sitting in the exam and these were the 4 topics given to you. First was renewable sources of energy, second was role of women empowerment, third was this narrative peace cannot be achieved through force, and fourth was India has become a medical destination. So just tell me by telling me the number 1 2 3 4, which topic would you have chosen in your paper? Yes Mehak, Vinci, Amit, Manu. और लॉजिकली इतना जल्दी मैं कौन बने करोड़पति नहीं पूछ रहा आपसे, सोच लो एक बार, क्योंकि आई मे आस्क यू टू राइट एन एसे ऑन वन ऑफ दिस. तो सोचो अगर आप सच में पेपर में बैठे होते हैं, if you were there and you had to write a 400 word essay, which topic would you choose? Would you choose on the basis of easy and difficult, or would you choose on the basis of
logical, rational essay and narrative essay, or you can say argumentative and expository essay, and then narrative or descriptive essay. What would you see? How would you choose it? What would be your criteria of choosing this? Okay, let me look at your responses first. चेंज नहीं करना है सर, ये तो बाद में आपने गलत डरा दिया, हम चेंज कर लेते हैं. नहीं. Okay, 2 1 2 1 2 1 2 4. Okay, Neeraj, very good. 1 or 4, Priya, very good. 1 2, mostly 1 or 2. Some of you say 4, but nobody said 3. किसी ने 3 नहीं बोला है. क्यों? Even on the YouTube channel, nobody has said 3. Why is that? कि सर इसमें पता नहीं चलेगा ना यार कि क्या ही सही होगा और क्या ही गलत होगा इसमें. Am I right? So that dilemma is always there. Climate change is hot topic in 21st century. तो उसको पढ़ के जाना चाहिए हमें, right? दो मस्त. इंदिरा नूई, कमला हैरिस के बारे में. अच्छा. More data. Exactly, Neeraj. See, this is what articulation is not that good, Shirish. Shirish, that's true. That's okay. We have a lot of information. Women SSGs, government initiatives. See, that is what I was talking about. See, अगर आप मतलब मोस्टली बच्चा क्या करता है, वहां पे सिर्फ बच्चा ये देखता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अनप्रिपेयर्ड जाते हैं या जो थोड़ा सा यूं सोच के जाते हैं किस्मत के भरोसे मैंने तीन मंगलवार में मंदिर गया हूं तो इस बार तो हनुमान जी पक्का हेल्प करेंगे मेरी, राइट? तो इफ यू वॉक इनटू द एग्जाम हॉल डूइंग थिंकिंग दैट, इट विल नेवर वर्क. ये याद रखना, ठीक है? वहां पे आपको जो चूज करना है, वहां पे उस बेसिस पे चूज नहीं करना कि कौन सा टॉपिक इजी लग रहा है. बच्चे क्या सोचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि इजी कौन सा है यार, ये ना ये पीस वाला इजी लग रहा है, ये लिख देता हूँ. पेपर पूरा ही तो करना है, ऐसे तो लिखना है ना 400 वर्ड का. मार्क्स तो मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, बट विल यू बी एबल टू स्टैंड आउट? विल यू बी एबल टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल? Probably not. So always choose the topic, not the easiest one. Always choose the topic that you feel on which you have the most information about. जिसके बारे में सबसे ज्यादा आपने पढ़ा हुआ है. अगर आपने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, सेल्फ एसडीजीज के बारे में पढ़ा है, COP27 पता है कहाँ पे है, उनके रोल्स क्या हैं, उनका एम क्या है, then what is happening around you, what are the observable changes that we have seen in the ecosystem around the world and particularly in India, then it also prompts this migration of people, birds, ecosystems, and there are many species which have become extinct and which are on the verge of getting extinct. वो सब यहाँ पे discuss होगा. So if you think this is the topic that I have the most information about, go for it. You should not choose the easiest one. You should always choose the one on which you feel that you are the most confident about. ठीक है सौरभ, तो मेडिकल डेस्टिनेशन में सौरभ फिर हम क्या लिखेंगे? इंडिया, अब क्या डेटा है आपके पास कुछ कि हाउ हैज इंडिया बिकम मेडिकल डेस्टिनेशन टू द वर्ल्ड? डू यू हैव एनी कंक्रीट डेटा राइट नाउ? अमित, विंशी, महक, मनु, डू यू नो कि हाउ इट हैज बिकम? Do you know how much what percentage of pharma is the GDP of India? How many companies work in India? How much product do we export in India? And then since when did we start incepting the medical India as as a medical destination? Why, first of all, why has India become a medical destination? First of all, that is it cheap? Is it just because of that? No, it's not just because of cheap. It's cheap and qualitative. Since the inception of AIMS, ठीक है, we have started research and development in this industry. And मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा अभी. अब आप जो ऐसे सोच रहे हो ना कि मेडिकल टूरिज्म के बारे में या फर्स्ट टॉपिक के बारे में क्या लिखना चाहिए, ठीक है, अब वो ऐसे जब आप देखोगे ना, then you will realize, अच्छा सर इस लेवल के एसेस लिखने हैं. Should I show you the essays, guys? इन टॉपिक्स पे एसेस दिखा दूं अभी या बाद में दिखाऊं? What do you say? Should we discuss drafting and everything first, or should I show you the essays first? कि ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमें कैसा लिखना चाहिए. चलो, then I'll show you. ठीक है, just give me a second. So पहले आपको मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल डेस्टिनेशन वाले दिखाता हूँ कि इसमें कैसा होना चाहिए आपका एस्से. These are the previous year questions. मैंने चारों एसेज के आपको एक सैंपल सॉल्यूशन मैंने अपनी तरफ से तैयार करके दिए थे. तो दिस विल प्रोबेबली हेल्प यू आउट. ठीक है, तो चलो लेट मी रीड इट फॉर यू कि आप क्या सोच रहे थे मेडिकल टूरिज्म में कैसा होना चाहिए इससे और कैसा एक्सपेक्टेड है आपसे वहां पर. ठीक है, लेट मी रीड इट आउट टू यू. India's medical travel industry started gaining momentum at the beginning of the last decade
as more private hospitals started reaching out to neighboring countries to serve their patients. Pioneers such as Dr. Reddy of Apollo, Dr. Shetty of Narayana Healthcare led by example in serving patients from neighboring Bangladesh and then expanding their service to Nepal. They were followed by Fortis, Medanta, Dr. Rela establishing deep inroads into CIS, Middle East and Africa. To complement the efforts of these hospitals, an industry of medical travel facilitators came into force, marketing these hospitals and setting up offices in these regions to market Indian healthcare. Today, almost 2 million patients visit India each year from these regions, generating $4 billion in annual forex each year. But the future is looking much brighter. India's health minister, Dr. Blah, 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 whatever it is, Prime Minister Modi, has designated medical tourism as a champion sector, giving it an unprecedented push. The government is pulling out all stops to make it India the #1 destination for medical tourism in the world, tripling it to $12 billion within 4 years, creating a new industry that generates millions of jobs across states. Never before has any Indian government given this sector such a consistent and comprehensive focus. But the Modi government fully appreciates this. Blah blah. ये political हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, by the way. However, to become #1 medical travel destination, a lot needs to change. Significant investment has already gone into making Indian hospitals at par with global excellence in equipment and talent. However, almost no effort has gone into building the ecosystem to attract international patients. Patients spend 80 to 85% of their time in guest houses around the hospitals, and that is where they get a bad experience and high chance of infection. Such guest houses need to be standardized, and hospitality players need to build patient-specific hotels near hospitals. 80 to 90% of international patients come to India through a medical travel facilitator who acts like a travel agent and health advisor to the patient. Next, significant investment is required in these companies who are marketing Indian healthcare across 70 plus countries through their offices, digital marketing and regular events, right? Then insurance is another very large opportunity. Indian insurers should actively pursue the opportunity for selling Indian health insurance to foreigners. This could potentially generate additional $9 billion in premium. And guys, this is true. By the way, do you know this? When somebody comes to India, there is no rule regulation of having a medical insurance. But when an Indian goes to any first world country or any these European or Western countries, it is and if you're staying beyond 6 months, it is a compulsion to have an insurance, medical insurance there. I've paid for it, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, and a huge amount. But the benefits are far reaching, ये याद रखना. But when I understood the benefits, कि मुझे benefits पता चले, मुझे लगा कि यार this is मतलब nothing that I've paid for this. Every doctor in that country is free for you. Every medicine that you take will be free for you. Every let's say operation or anything that you need that includes physical, mental, both, every sort of health will be included in that gamut. So if I am paying $500, right, which seems to me okay, 8 into 5, 7 into 5, 40,000 rupees. So 40,000 rupees for medical insurance, it is too much for me. But if I see that for 1 year, wherever I go, whatever happens to me, anything, any accident, any medical, anything at all, if I have to visit a clinic, a hospital, or a multi-speciality hospital, or anything for that matter, everything will be free for me. When I see that, I'm willing to pay. So same should happen for India. When people come to India, there should be an option to give them medical insurance, which we do not look into, right? So this is true. Another opportunity in cross-border telemedicine. In cross-border is telemedicine. India has already become the call center for the world, given its advantage in skill and cost. It could similarly become the telehealth center of the world, healing people in India and through India. Our unique knowledge and position in traditional medicine of Ayurveda is another advantage that needs to be adequate marketed to the world. While we are already well known for yoga, patients still don't know the therapeutic potential of Ayurveda in treating diseases such as kidney failure, infertility, eye disorders, etc. Under leadership of Modi, blah blah blah, these initiatives under the government's guidance is sure to make India #1 destination for medical tourism, saving millions of lives, generating valuable jobs, and over $13 million in forex. So this was a 250-300 word essay that I could come up with. इसमें थोड़ा सा और मुझे फार्मा का एक जो मुझे लगा वो मुझे लिखना चाहिए था इसमें. Pharma industry is the biggest industry, and it is the do you know India is called the Medicos of America today. 80% of American medicines are manufactured and exported from India. And the huge amount of forex is generated through that. So I would have also mentioned that in this essay. So is tarah ke essay, these sorts of essays are expected from you in the exam. Got it, guys? Informative, based on your research,
बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डेटा, स्टेटिस्टिक्स। क्या इसमें कहीं आपको लगा कि स्टूडेंट कोई अगर कोई लिखता तो ग्रामेटिकल मिस्टेक करता? प्रॉब्ली नॉट अ लॉट, right? कोई spelling mistake होती, because most of it is based on facts and data, reports, schemes. So such is the essay expected from you guys in your exam. Got it? Yes, even in Russia, Manu, that's true. It looks like, देखो ये मैंने किया था, मैंने एडिट किया था, मतलब मैंने इकट्ठा किया था, गूगल से ही किया था, मुझे याद नहीं हिंदू का है कहाँ का है, बट यस, इतना डेटा नहीं पता था ना ऋषभ, तो करना पड़ेगा। दिस इज आरबीआई, है ना? अब मैं ये बोलूंगा तो बुरा लगेगा, थोड़ा सा हलवा नहीं है, बिकॉज वी आर एस्पायरिंग टू बी एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, ठीक है? दिस इज द सेकंड टफेस्ट, थर्ड टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, इफ यू रियली रियली आस्क मी, आफ्टर यूपीएससी एंड कैट, दिस इज द थर्ड टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री, अगर आप मुझसे पूछो तो। ठीक है? तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी रेपुटेबल जॉब, और ये सब पता होना चाहिए, ये नहीं कह रहा मैं याद होना चाहिए, बट एटलीस्ट देखो, मैंने यही चीज मैंने आपको बोली थी कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हेल्थ केयर वर्टिकल, राइट अमित? तो क्या मैं जब हेल्थ केयर वर्टिकल को प्रिपेयर करूंगा, तो क्या मैं फार्मा को नहीं देखूंगा, पढ़ूंगा उसमें? क्या मैं उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं पढ़ूंगा? विल आई नॉट फोकस ऑन दैट? मैं तभी बोल रहा हूँ टॉपिक की बजाय वर्टिकल्स को प्रिपेयर करो, दीज टॉपिक्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। अगर मुझे ये सब फार्मा, आयुर्वेदा और इन सब के बारे में मुझे पता है, ठीक है, इफ आई जस्ट नो अबाउट दीज बेसिक्स एंड आई नो द द फैक्ट्स एंड डेटा, I'll still be able to do justice to my essay. ये तो फिर भी किसी ने बहुत सारी रिसर्च के साथ किया होगा, दिस इज ट्रू। किसी ने सर बिना गूगल के ये लिख सकता कोई ऐसे ऐसे? नो, ये पक्का किसी ने हेल्प तो ऑब्वियसली ली होगी, लेकिन द पॉइंट इज, क्या किसी को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे फैक्ट्स याद होंगे? मे बी नॉट, बट कुछ तो याद होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक भी स्कीम याद नहीं है, एक भी रिपोर्ट, आयुष्मान योजना मेंशन करनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं थी। आयुष्मान योजना सबको पता होनी चाहिए, ठीक है? हमारा हेल्थ केयर इंडेक्स पता होना चाहिए, इंडिया का कितना था पहले और अब कितना है, ठीक है? देन ऑल दो ये भी चीज मेंशन करनी चाहिए थी कॉन्ट्रास्ट में, कि इंडिया यूज्ड टू हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स इन द कंट्री, which has changed now. ठीक है? We used to have about 5 million deaths in the country every year due to malnutrition, malaria, this your tetanus and all that. Every year it has reduced significantly now. So अगर आपको ये चीजें पता है, वो और ये फॉर्डर मटेरियल में गिवन है आपको, अगर आपको ये लग रहा है सर इतना हम कहाँ से पढ़ेंगे, इट हैज, ऑल दिस हैज बीन गिवन टू यू इन योर फॉर्डर मटेरियल इन योर कोर्स, लेकिन वो पढ़ो तो गई ना, आप उसको याद तो रखना आपका काम है गाइस, राइट? तब वो है आपका एक्सपेक्टेड यहाँ पे जो होना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट राहुल, कीप इट अप significantly, absolutely. As health and education are not in syllabus this year, are they in किसने कहा health और education इस year syllabus में नहीं है शिवम? ये कौन सा syllabus है जो हमें नहीं पता, जो आपको मिल रहा है? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एवरी टॉपिक है इन सिलेबस, याद रखना। ये ईएसआई का पेपर नहीं है ना संदीपन, ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। ईएसआई एफएम में जो आपको वो टॉपिक्स, तभी तो मैंने पहले बोला था संदीपन, आई टोल्ड यू दिस अर्लियर के व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग सेपरेट ईएसआई एंड एफएम एग्जाम, so that they can solely ask you FM and ESI based topics in those exams. English would be more based on your generic topics, general topics. Got it? So that is the point here. I'm also giving you more such essays, guys. ठीक है? Peace cannot be achieved through war. It can only be sorry. It cannot be achieved through war. It can be achieved through understanding. अब ये ऐसे कैसे लिखते हैं हम? राइट? अब ये आपको दिया हुआ, यू कैन जस्ट रीड इट, ओपनिंग देखना आप कैसे होगी वहां पे, ठीक है? आपको शायद में भी एक अच्छी ओपनिंग मिल जाए ऐसे ऐसे के लिए। देन आई हैव आल्सो गिवन यू रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब बच्चा बोले सर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कितना ही तैयार करके जाएं, राइट? लेकिन पॉइंट ये, अगर आप नहीं करोगे इट कैन बैकफायर, तो पढ़ के तो जाओ एटलीस्ट। ये सब आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर भी नहीं पढ़ के जाओगे, देन हु इज एट फॉल्ट? देखो नहीं पता, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन गिवन था और फिर भी नहीं किया, देन हु इज एट फॉल्ट? समझ रहे हो ये चीज? तो मैं वही बोल रहा हूँ, ऑल दिस हैज बीन डन फॉर यू बाय अस, ये सारा हार्डवर्क हमने किया हुआ है आपके लिए, बट वो लेकिन पेपर में तो आपको ही जाना है एट द एंड ऑफ द डे। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे कितना फैक्ट एंड डेटा है देखना एक बार। 18% टू जीडीपी by 2025, $770 billion, ठीक है? Then 700% jump in GDP from 1995. Then IMF also says this growth is predicted. Then उसके बाद SDG इंडेक्स आ गया, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर आ गया। देन फिर उसके ऊपर ये देख लो, आपका फिर इसके अंदर कितनी सारी योजना है, जो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसके अंदर, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सारे विमेन सेंट्रिक आपकी स्कीम्स है सारी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? देन उसके बाद फिर डिस्पाइट द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, फिर वो क्या बोल रहा है, विमेन आर इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूटिंग टू
the labor workforce, जैसे 32% of the entire population and employment, 52% of the workforce is self-employed and 30% as casual workers, while only 18% have regular jobs. Within 52% self-employed, women constitute only a dismal amount of 13.7%. अब ये मुझे challenges भी discuss करने पड़ेंगे अगर holistic करना है तो ऐसे को कि problems कहाँ कहाँ पे है, ठीक है. फिर 11% of the women were reported that they were aware of available benefits, मतलब वहाँ पे मतलब एजुकेशन ही नहीं है, आउटरीच नहीं है. 27% ऑफ वुमेन बेनिफिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस. जो फॉर्मल लेंडिंग, अब ये चीजें देखो, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा है, तो वहां पे पढ़ा होगा कि कितने परसेंट वुमेन है. अगर आपने पढ़ा है कि कितने फीमेल्स हैं अपने पार्लियामेंट में, आपको वो रिप्रेजेंटेशन नंबर पता होगा. तो ये जो अलग अलग तरह के फैक्ट्स होते हैं ना, दे कम टुगेदर एंड देन दे बिल्ड अप द एसे फॉर यू. और यही इसकी राइट अप्रोच होती है. तो इस तरह से आपको इन एसेज को लिखना होता है गाइस, इनफॉर्मेटिव. अब ये जो ऑसवॉग वाला था, ये भी आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर ऑसवॉक के अंदर क्या हुआ, फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई, और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन 2015, फिर आपका COP27, वो सब भी आ जाएगा. तो यू कैन रीड दिस गाइस. देखो, आई टेल यू समथिंग, क्या सर जो एसे आप दे रहे हो यहाँ पे, विल दिस बी द परफेक्ट एसे, द बेस्ट एसे दैट देयर इज? नो, not sure. I'm not, I cannot say that confidently कि यही best essay है. But the point is, guys, there is no such thing as right essay or wrong essay. आपको ये समझना है कि there is no such thing as right essay or wrong essay. There is only good essay or bad essay out there. तो good essay और bad essay का difference समझना है आपको, ठीक है. इनको कैसे करना है कि गुड essay कौन सा होता है, जो ज्यादा होलिस्टिक है, जो ज्यादा फोकस करता है फैक्ट्स एंड डेटा के ऊपर. सो फर्स्ट पॉइंट इज टू चूज योर टॉपिक वेरी वाइजली, जिसमें आपको सबसे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील हो, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगे आपको टॉपिक. देन सेकंड स्टेप इज प्लान योर एसे, कि मैं कितने पैराग्राफ बनाऊंगा. 400 वर्ड का मुझे एसे लिखना है, तो 400 वर्ड्स में you have to plan it beforehand कि मेरा इंट्रोडक्शन है, that should range about, my intro paragraph should range about 60 to 70 words, जिसमें मैं अपनी सारी मतलब 4 to 5 sentences at max जो मैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में दूंगा. देन इन द बॉडी पार्ट आई विल मेक 4 or 5 पैराग्राफ्स. ये 4 और 5 पैराग्राफ्स में मैं क्या क्या चीजें डिस्कस करूंगा. पहले सोशल एंगल, सोसाइटी पे जो उसके प्रेवलेंसी है, जो प्रॉब्लम है, फिर उसके चैलेंजेस डिस्कस करूंगा मैं. Okay, what are the challenges along with this? Then what is the repercussions or consequences of these challenges or these problems which are prevalent in the country? फिर मैं ये discuss करूंगा next paragraph में. Then what are the steps and measures taken by the government in this regard? फिर मैं वो discuss करूंगा इस context में. Then along with fact and data, वो सारे present करते हुए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है. Then next paragraph I'll discuss the solutions, the viable solutions to the problems that we have discussed above, and then this will be my body part, and then last I'll give a conclusion paragraph जिसको हम बोलते हैं, and in conclusion I will sum up the whole essay and I'll give a way forward. अब वे फॉरवर्ड एक पॉजिटिव नोट पे भी क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, दैट विल सर्व द पर्पस. ये होगी प्लानिंग आपके एसे की. अब इसको बोलते हैं यू डू नॉट जस्ट सिट इनटू द एग्जाम रूम एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर एसे, यू हैव टू प्लान योर एसे बिफोर हैंड. तो प्लान करने का मतलब क्या है, यू राइट डाउन, यू मेक डाउन के आई विल मेक 3, 4, 5, 6, 7 essays out there. Then third is the outlining of your essay. Now once you've done this, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, फिर आपको क्या करना है गाइस, एक रफ ड्राफ्ट बनाना है. रफ ड्राफ्ट कैसे, मान लो आपने बनाया मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल टूरिज्म, मान लो आप इसी के ऊपर लिख रहे थे, तो आपको अब यहाँ पे अपनी आउटलाइन बनानी है कि इंट्रोडक्शन में स्टार्ट विद दिस. इंट्रोडक्शन में मैं क्या डिस्कस करूंगा कि इंडियाज हेल्थ केयर इंडेक्स यूज्ड टू बी 148 आउट ऑफ 206 कंट्रीज, नाउ इट हैज कम डाउन टू this stage, ठीक है, and this has only been possible due to the recent developments and recent improvements in the healthcare sector and measures and measures taken put in by the government in this regard. But still there needs to be a lot can be done in this regard. तो ये करके मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया. फिर मैंने अपने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया कि मैं सेकंड पैराग्राफ में ये वाला फैक्ट डिस्कस करूंगा कि नीति आयोग ने ये बोला था, तो नीति आयोग के साथ ये वाली डिस्कस करके मैं ये पॉइंट डिस्कस करूंगा. देन आई टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट, कि इसमें एक्सपोर्ट कितना होता है फार्मा में. नेक्स्ट में मैं क्या डिस्कस करूंगा कि उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, ठीक है, वो इकोनॉमिक एंगल आ गया मेरा. देन उसमें फिर मैं डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स एंड मेजर्स लिए हैं, आयुष्मान योजना आ गई मेरी, स्टेप्स एंड मेजर्स आ गए इसमें मेरे, ठीक है, आयुष्मान योजना, ये योजना, वो योजना, ठीक है, फ्री मेडिसिन, फ्री हेल्थ केयर कवर और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो सब आ गया. फिर मैं डिस्कस करूंगा आयुर्वेदा वाला,
आयुर्वेदा और ये सब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन जो हम वहाँ पे इंडिया में जो अलग है, आयुर्वेदा होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एलोपैथिक वी आर यूजिंग आयुर्वेदिक और द अदर, वो भी काफी हेल्पफुल है। देन योगा एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ दैट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। योगा डे किस दिन होता है, उस दिन पूरे वर्ल्ड में होता है, ऐसे हम डिस्कस करते हैं। देन वी गिव वाइबल सॉल्यूशंस टू इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स, कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अभी भी चैलेंजेस हैं, जैसे मालन्यूट्रिशन अभी भी बहुत है, तो डीप रूट्स कंट्री, देखिए वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म में यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अच्छी बात कर रहे हैं, राइट। तो हम बस ये लिखना चाहिए कि मोर कैन बी डन इन दिस रिगार्ड, कि मतलब चाइल्ड इसमें न्यूट्रिशन में और ग्रोथ में और फीमेल के लिए स्पेशली जो मदर्स होती हैं उनके लिए हमें काफी कुछ करना चाहिए, विच विल ले अ बेटर पाथ फॉर द फ्यूचर in this industry. And then I will give a way forward saying that if this is done properly, it can become, India can become number one destination because of its क्या बोलते हैं, intelligent and cost effective healthcare services, and it can become uh, let's say a huge vertical in the economy of the country at the end of the day as well. So if proper necessary measures are taken in this regard, it can be fruitful or it can be productive, and it can result into a lot of jobs and opportunities for the future of this country. So ऐसे ऐसे आपको ये outline करना है, and then you start executing your essay. And guys, once you start writing your essay, उसके बाद दिमाग में कोई आइडिया नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। मे बी छोटा मोटा कोई आपको फिगर या फैक्ट याद आ गया तो आ गया, otherwise you do not deviate from the plan that you have written, because guys, unless you have a blueprint before you start writing your essay, it is pointless to start writing it. See, अगर आप घर बनाना शुरू कर रहे हो अमित, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ठीक है, अब कल को क्या होगा, मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, मैंने फाउंडेशन रख ली, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यार इसमें सीवेज पाइप भी डालना था, इसमें मुझे अपने कॉर्नर स्टोन्स भी डालने थे, मुझे इसमें वेंटिलेशन के लिए भी डालना था, मुझे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स भी डालने थे, वाटर इनलेट आउटलेट पॉइंट भी डालने थे, वो कहाँ गए? अब फिर वो सारा घर तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा, वो कर नहीं सकते, तो बीच बीच में जैसा जैसा हो रहा है ना, काम चल जाता है, वैसा करना पड़ता है फिर। और बच्चे ये बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि विदाउट द ब्लू प्रिंट, इफ यू स्टार्ट राइटिंग योर say, at the, probably you'll be able to write 1 2 3 paragraphs. After that you will run out of ideas, and then you will keep on sitting there looking at the, at the ceiling, thinking कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं, सब कुछ तो मैंने पहले 2-3 पैराग्राफ में लिख ही दिया है. That is what happens. So plan it, right? हाँ, मैं वो डिस्कस करेंगे शुरू में भी कि वो plan it and then execute it. तो टाइम मैनेजमेंट जो मैं आपको बता रहा था कि अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या आपका वो होना चाहिए, आगे करेंगे इसमें डिस्कस में भी कि कितना टाइम इसमें देना चाहिए, कितना टाइम उसमें देना चाहिए. दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल कि फर्स्ट हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा, द मेन स्ट्रक्चर दैट वी नीड टू हैव फॉर आवर एसेज इज दिस, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ड्राफ्ट. Remember this? We did talk about this earlier. Universal draft. What is universal draft? Everything that is written, smartly or properly, it is to begin with an introduction. And what is mostly introduction? If you ask me, always start with the background of the topic. Now many students start with the definition. मैं बहुत funny चीज देखता हूँ, जैसे I remember कि मैंने एक टॉपिक दिया था फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर, मतलब मॉक टेस्ट के अंदर पिछले साल ना, तो बच्चों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो स्टार्ट कैसे करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स को, पता है? डेफिनेशन के साथ. व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व्स? फॉरेक्स रिजर्व इज द रिजर्व केप्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट. अरे भाई, आपको क्या लग रहा है जो इवैल्यूएटर है उसको नहीं पता फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? डू यू थिंक दैट इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर? एंड यू आर वेस्टिंग योर वर्ड लिमिट because by giving a definition. So do not start with your essay with a definition. मैं कल की बताता हूँ, कल मैं पता नहीं, हाँ इसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहा था. हाँ, एमएसएमई के ऊपर मैं एक बच्चे का मॉक टेस्ट इवैल्यूएट कर रहा था, एंड द टॉपिक वाज द रोल ऑफ एमएसएमईज इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया. ये मॉक टेस्ट के अंदर एक टॉपिक था. तो मैं बच्चे ने शुरू किया हुआ है इससे डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई के ऊपर. एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया. ठीक है भाई, चलो ये इतना तक ठीक था. फिर वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि माइक्रो इंडस्ट्रीज आर दोज which have a capital investment from this crore to this crore, medium are this to this, small are this to this, and this basically constitutes the MSME sector of the country. ये उसने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में दिया हुआ है. Do you think that you have even touched the topic up till here? और इंट्रोडक्शन में आपने ये सब करके डेफिनेशन देके सारा जो इंटरेस्ट था वो लूज कर दिया रीडर का, इवैल्यूएटर का. उसको नहीं पता एमएसएमई क्या है. एवरी टॉम डिक एंड हैरी नोज टुडे के एमएसएमईज क्या है कंट्री के. यार, आपको शुरू कहां से करना चाहिए था? एमएसएमई की इंसेप्शन कहां से हुई, उसका आज की तारीख में वो कहां पहुंच चुका है और आगे वो कितना पहुंच सकता है. तो यू स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ
introduction that you can give any topic. So guys, instead of giving definitions, give background information about the topic related to the background आप जो बताना चाह रहे हो उस topic के बारे में, and then so that when you start the body, you are at that point you can start explaining the topic to the reader. ये आपका aim होना चाहिए, ठीक है? Then in the body part, I have given, usually students ask me, sir, कि कोई structure है ऐसा कि जो हम हर बार follow कर पाए? तो मैं आपको पहले दो type of essays के लिए तो दे सकता हूं, मतलब आपके आर्गुमेंटेटिव और आपके एक्सपोजिटरी, इनके लिए दिस स्ट्रक्चर प्लेज आउट द बेस्ट. आईसेप्सी स्ट्रक्चर. आईसेप्सी इज फर्स्ट इज इंट्रो, फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन. इन द बॉडी पार्ट, एस स्टैंड्स फॉर social, what this issue or what this topic has impacted, what is the impact of this topic or this issue in the society, on the social fiber of the country. Then second is the economy. What is the economical or economical impacts or economic challenges that will be discussed. Then the political part. So ISEP-C is a very useful structure if you start following this. And then C stands for conclusion, where you conclude your essay by giving viable solutions and a way forward. So this ISEP-C structure will definitely give you a structure to at least begin with. अगर आप start आज कर रहे हो, तो this will give you at least something to begin with कि अपने ऐसे को structure कैसे करना है. Start with background information, then second paragraph give the social dimension, how this topic has impacted, this issue has impacted the society, how it has been prevalent in the society, how it has shaped the society. So that is to be discussed. Then economic impacts of the society, economic impacts of the topic, how this topic has impacted the economy of the country. Then what are the political steps and measures taken by the government. These are the basic requirements of any topic. Then along with that, if you want to mention the challenges, mention it. If there are social challenges, mention it in social paragraph. If there are economic challenges, mention them in economic paragraph. If there are, let's say there are challenges, for example, infrastructure and research and development is not there, then put it in political paragraph. So depending upon which it relates to, put it in that paragraph. Then in conclusion, you have to give two things: viable solutions. You give viable solutions to the problem, to the challenges, and then always end on a positive note. And to end on a positive note, you always give a way forward. So if you ask me, guys, what is a holistic essay? Which essay would fetch the best marks possible? This is the right way or right approach for your essay writing. Is this clear to everyone, guys? Show me thumbs up in the camera if it is. Right, chalo. Now, key points to remember when you are drafting your essay. Okay? First, hook your reader. And what do I mean by hook your reader? Your evaluator should not get bored by what you have written. Right? He should be amazed. He should be impressed. He should be intrigued by what you have written. And that will happen when you give a punchy opening. For that, I told you, well begun is half done. First impression is the lasting impression. So always strive to have, maybe you can spend 1 more minute for your introduction paragraph. But if you make it really, really impressive, half of the job is done. All right. So hook your reader. Don't make your essay boring, repetitive, monotonous. Use different ideas, new points, new aspects of the topic. That is what will keep your reader evaluator hooked to your essay. Give background information. This is what I meant when I said use facts, data, stats to support your thesis. This is very, very important. Then to present your thesis statement, use reports. Whatever you want to convey, use reports, and then map your essay structure. वो हम कर चुके हैं. Use reports and schemes that have been launched by the government or authorities or stakeholders, so that you can convince the reader that you are well read, you are up to date. So guys, I'll tell you something briefly. You are basically selling yourself through this exam. Now, what I mean by selling yourself, okay, not selling, but I mean by, how will they judge if you are the right person for this job or not? So how will they decide whether you deserve this job, you deserve that chair or not? So to stand out, you need to you need to sell yourself. And before interview, you'll not be physically talking to anyone, right? So in this paper, how will you prove to the evaluator that you are the best possible candidate for this job? By doing this, by presenting these updated informations. And this is how he will understand, oh, the student has put in a lot of hard work. He knows good data. He knows good facts about the topic, good stats. He knows the reports.
that have been launched by different agencies. He knows the schemes that have been launched by the government. What else is there to read about the topic? I don't think there is anything else beyond this. Is there? He's giving you the future, the way forward. He's giving you the solutions, what can be done. He has mentioned the challenges. He has mentioned all the different angles, social, economic, political. He has given a very good background. Now, this is called the perfectly executed essay out there. And map your essay structure. This, I think I've told you earlier, this is what we were talking about, introduction, body, and conclusion part. So usually if you go online, guys, you'll only find, teachers or people teaching the kids that एक structure follow करना चाहिए, IBC, introduction, body, conclusion. इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मिलता नहीं है. Right, but let's go into the depth of this. Let's understand what needs to be done in this regard. ठीक है, तो ये मैं आपको आज पढ़ने के लिए देता हूँ guys. This we will cover tomorrow and then we will start writing our essays tomorrow. ठीक है, but I have something for you. ये आप पढ़ सकते हो, मैं आपको PDF में दे दूंगा. We'll discuss this tomorrow with examples. आपकी writing strategy क्या होनी चाहिए, आपके target areas क्या हैं. ठीक है, this all will be discussed tomorrow in the session. ठीक है, grammatical accuracy, error free articulation, good vocabulary and backup thesis, and drafting skills. These are the key target areas that you need to build up in next 20 days. ठीक है, if you are lacking in any of these four, either of these four, right, please make sure that you start building up on that, and we'll discuss these in details. But I'll give you, these are the previous year question solutions that I've given you in the PDF. You can read them and you can see what level of what sort of essay you have to write there. Then these 10 tips and tricks, these I wanted to discuss with you. So these I'll discuss with you tomorrow. These will play a very important role for you, but I'm not showing them to you today. This is what I want you to start with. So first of all, you should know the interface of your exam, guys. If you want to know the interface of your exam, I can give you a website also where you can practice on your own. The website goes by the name of wordcounter.com. आप उस पे जाके अपने ऐसे practice कर सकते हो. उसमें ऐसा ही पता है paper interface कैसा होता है. Let me give you a brief idea. So for example, question number 1. This will be given to you. 4 topics are there and instructions will be given to you on the top. There will be a word counter on the top right corner and a timer on the bottom right. Right, and you will be required to type your answers in the dialog box. So what the biggest challenge is, when you start writing your essays, what happens is, for example, you've written up till here. So probably what should happen is, usually, ideally what should happen is the cursor should go to the next line, right? But it doesn't happen that way. This, whatever you have written here, this starts moving to the left and this keeps on going to the right. So up till the whole character limit of this line is finished, then automatically the cursor will come to the left. And then you'll not be able to see the whole line that you have already written there. So this is the biggest challenge. And once you are done doing, once you are writing 4, 5, 6 lines, then these lines also start going ahead. So you'll not be able to read at one point of time everything that you have written in dialog box. So there will be a scroller given on the on the sides of this dialog box, which you will require to scroll top to bottom, left to right. So this is the biggest challenge of the interface, and this is what you need to get used to. So we have also provided you the interface in our course. The 5 mock tests that you will be writing, full length mock tests, they will be on the interface of the exam. You can go see the interface and you'll see how it works. But when you're practicing on your own, there are 2 ways to practice. Either you can you can reshape your notepad. You all have computers, so there is a notepad, not Word document, guys. There is a notepad in your computer. Use that notepad and resize it to a size of a dialog box, and then start writing your answers in that. Either practice that way, or the website I told you, wordcounter.com. You can use that. That also has a similar interface to your exam. So you can also practice that website. On that website, that will give you the right context. Okay, when you're practicing on your own, Word पे लिखना बंद करो. Reason for that is, guys, Word में there are lot many shortcuts that we use. Control C, Control V, Control Z, Control underline, Control bracket, Control bold. That will not be allowed in the exam. So please understand, no shortcut keys will work in the exam. You'll not be able to change anything. Size of the bullets or underline karna, bold karna, nothing will be available there. You'll only be able to use your alphabet keys, space bar, arrow, and number keys. Now, other than that, you'll be able to use your mouse, nothing more than that. So ये जो है ना, Alt tab करना, ठीक है, Control Shift, Control V, ये जो हैबिट है, ये निकल जानी चाहिए अभी आपकी, because वहां और एक और बहुत बड़ा वो होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको कोई गलती अगर आप लिखते हो तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन आ जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? इट गिव्स यू द एरनेस पार्ट, बट पेपर में ऐसा नहीं होगा. सो वो चीज भी आपको वहां पे
you'll have to fight it out. Okay. Yes, Pranav. See, this is about RK. This is why this is how they want to see if you can, perform under pressure or not. If something is new to you, will you still be able to, execute your answers there or not? So that is the point there. And once you know the interface, it should not be a surprise for you. We have ways to, why don't they give you Word document? Then what is the point of making you write all this? Now, if you were able to control, shift, control, अगर Google भी दे देते तो साथ में मजा नहीं आ जाता RK? है ना, ऐसे ही लिख डालते हैं 15 मिनट में पेपर खत्म, FMESI 300 में से 300 मार्क्स, right? The point is to challenge you, na? To put you under pressure, to put you under this. So that is the whole game, right? So guys, before we end, now this is what I wanted to show you. I'm giving you 20 important topics to start with, and what I want you to start doing is start your research on these 20 topics. Just to start with, क्या इनमें से कोई पेपर में आएगा? I'm not sure. इनसे related कुछ आ सकता है? Yes, absolutely. But as I told you, start working on your verticals. जो मैंने वर्टिकल आपको बताया, लेट्स सी हाउ मेनी वर्टिकल्स यू कैन आइडेंटिफाई. ठीक है, सोशल वर्टिकल में कितने आ गए? एजुकेशन, हेल्थ, climate change, what else, women empowerment, what else, literacy, your agriculture sector, your irrigation, your other sectors like fisheries and handicraft sector, traditional methods of doing medicines and all that. So this is your social sector. Then economy sector, growth, economy, to 2047, 5 trillion economy, investment in defense. Now, all these are valid topics for these verticals. So start working towards your verticals, but before, side by side, start preparing for these topics. 10 topics based on finance and economy, RBI and its role in to foster green entrepreneurs. Because guys, this seems like a financial topic, but still it's a very generic topic. If you're preparing for RBI, you should know the rules and purpose of RBI. RBI should de-dollarize global trade. This was in news recently, if you remember, guys, right? Indian currency replacing dollar or yuan replacing dollar in the global chain. That was in news recently. So this is the same topic. Indian economy opportunities and challenges. Very broad, but still very viable topic. Suggest measures for Indian banks to be globally competitive. This was in news recently, remember, when the Deutsche Bank and Silicon Valley Bank, they were in trouble. So, news or media started pushing this, that Indian banks should be globally competitive. Indian banks should take the lead. Major challenges before government undertaking banks, all these mergers and acquisitions, that will come into play here. Digital currency, e-rupee. Somebody was talking me, this is important. Yes. ONDC and its prospects in India. G20 economy and India. India is emerging economic superpower in the world. Very, very important topic. India's own digital currency, e-rupee. Right, guys? Do you know this? These are two different things, e-rupee and e-rupee. Please understand, ये दो अलग-अलग चीजें हैं. One is related to UPI and what is related to your currency. मतलब जो आपके tokens होते हैं, आपको मिलते हैं. तो please दोनों के बारे में अलग से पढ़ के जाइएगा. ठीक है, तो these were topics based on finance and banking. Then topics based on economic and social issues, ESI. Indian startups, जो अपने ये हैं यूनिकॉर्न्स हैं, startups and their contribution to making India a developed nation by 2047. Very important topic. Women entrepreneurs in India. Impact of 5G on economy and society. Uniform civil code will unify India. Comment. This is now Indian civil code will unify India. Comment. This is a argumentative topic. अब ये आपको समझना पड़ेगा अब से एक topic को. Women entrepreneurs and Indian economy. This is an expository topic. Indian startups and their contribution. This is an expository topic. So most of the times you get expository or argumentative. Sometimes they give you narrative. ठीक है, जैसे India's UPI system will go global. Explain. ठीक है, this is an expository topic. इसमें कोई argument नहीं है, कोई narrative नहीं है. It is fact based. Significance of population control bill. Now this can be argumentative. Reservation of economically backward class. This can be argumentative. Increasing scopes of tourism industry in India. This is expository. Social media and violating rights to privacy. Again, expository. Pollution free India. Again, expository. This is narrative. Pollution free India. Okay, now this will encompass everything that you have read about your
about your climate change, greenhouse gases, COP27, self-development goals, air quality index, and catastrophes around the world. We recently saw earthquake in Turkey, floods in Pakistan. We are going through floods in India, northern part of India. So poor ecosystems in Himalayan region. What is that? This is all climate change that we are experiencing, and for the same reason, the developed countries which should bear the brunt of this. On the other hand, we are the ones who are doing this. So the COP27, COP26 meetings, these are all together. They are all for the same reason. Come together so that we can share the climate change mitigation program, and we can share the amount of money that needs to be put into it. So start with these topics, guys. आपको आज क्या करना है? What I want you to do today as a homework is, guys, choose one topic out of these 20. Either it can be a finance topic, or let's say choose two topics. दो करना है, एक करना है. Your call. चलो, this is your call. I'll leave it to you क्योंकि आपको FME SI भी करना है, guys. So I'll not push you. So choose one topic, any of this. Not the easy one. ये मत सोचना सर pollution वाला easy लग रहा था, यही कर ले. Easy नहीं. Challenge yourself. Take the challenge. Choose the topic which you feel is the most difficult for me right now. Usko choose karo. Go do your research. Okay, go to Wikipedia, go to fodder material, go to your relevant sources, prepare for that topic, and write down one essay in 30 minutes. Start a timer in your mobile phone, sit down on the website I told you, wordcounter.com, or on the notepad, and write down your essay, 400 words. Try to follow whatever we have discussed today. Right? The structure of your essay, the dimensions that need to be discussed, outline of your essay, rough draft of your essay, all that needs to be first thought of. So once you have prepared and once you have created your rough draft and everything, then go write your essay. And tomorrow I'll ask you to show me your essays in the class. So tomorrow morning 10 a.m., first thing in the class, in the chat box, you will be copying and pasting your essays there, and I'll be reading your essays for you. I'll be evaluating, not evaluating, but I'll at least read your essays and see if you are doing the right thing or not. Is it fair enough? So guys, are you ready for this homework? And this is not for me यार कि मुझे जानबूझ के नहीं देना पड़ रहा होमवर्क. कैसा होमवर्क दे रहे हो आप तो? This is for you because exam is just around the corner यार. Right? अगर 2-3 महीने होते मैं नहीं देता, लेकिन 15 दिन भी नहीं बचे मुश्किल से. Right? So Janya, some of these topics would be there in the fodder material. Some of them may not be there. ये मैंने compile किए थे. Fodder material is created by your current affairs team, GA team. वो team create करते. It's a huge team. क्योंकि एक बंदा सारा fodder material एक single minded हो जाता है ना. What the team does is they sit down, they put in their ideas कि सर ये topic मुझे लगा important is साल दूसरे बताता है, फिर उनमें से compile होते हैं, then the fodder material is made, right? So some of these topics would be there, some of these topics may not be there, right? If they're not there, you can use Google, Wikipedia, everything is available. यार AI use करो guys, why are you not using AI? ठीक है, आप artificial ये chatbots क्यों नहीं use कर रहे हो आप लोग? Guys, I've seen students doing this last year, not this year, last year. ठीक है, अभी एग्जाम आए थे कुछ दिन पहले, उसके लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे. ठीक है, और वो क्या कर रहे थे वो बता देता हूँ. What they were doing was they chose a topic. ठीक है, उसके बारे में उन्होंने पहले AI को बोला एक ऐसे लिख के दिखाओ. ठीक है, और उस ऐसे को उसने लिखने को बोला, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं उसको. In the meantime, they did their research. ठीक है, they did their homework, they wrote down their essay, and then they asked AI to write an essay. दोनों ऐसे हो गए. फिर उन्होंने AI वाला ऐसे पढ़ा और देखा कि उनमें और मेरे ऐसे में कहाँ कहाँ डिफरेंस है, कौन से पॉइंट्स हैं दैट आई वाज नॉट एबल टू इंक्लूड इन माय एसे. वो मैंने सोचा मैं अच्छे से लिखूंगा. फिर वो दोनों एसेज उन्होंने ग्रामरली पे डाले. ठीक है, उनको इवेलुएट किया कि कहाँ पे गलती थी, क्या था. दोनों का स्कोर आया. फिर अपने ऐसे में उन्हें इंप्रूवमेंट्स पूछी AI से कि इसमें इंप्रूवमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं. वो इंप्रूवमेंट्स उन्हें बताई, एंड देन दे आस्क कि इसमें द बेस्ट ऐसे पॉसिबल. इफ यू डू दैट, ठीक है, you'll get the very refined product that you need for this. Pranav is very excited. तो excited तो होना ही चाहिए यार, क्योंकि देखो if unless you enjoy this journey, right, there's no point of expecting to become. जयंत थक गए हो? नहीं, थोड़ा सा ये देखो मोरल डाउन सबका होता है. मुश्किल लगती हैं चीजें, लेकिन मुश्किलों से ही तो आगे बढ़ना है. इजी होता तो फिर तो यार हर कोई नहीं कर रहा होता, फिर तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता यार. If it were easy for everyone out there, then there would not be there would not be unemployment in India. हर बच्चा कर ही जाता. लेकिन the challenge is जितना बड़ा पेपर उतना बड़ा उतनी ज्यादा मेहनत है. ठीक है, and if you enjoy this process, that is the only way you can get it right. So please understand this, guys.
नहीं, ये वीडियोस YouTube पे नहीं होंगे ऋषभ. यू विल गेट रिकॉर्डेड वीडियोस ओनली इन द कोर्स, ओनली इन द कोर्स इटसेल्फ. ठीक है, ये आज की वीडियो थी जो सिर्फ YouTube पे थी, जस्ट टू शो आवर पोटेंशियल स्टूडेंट्स कि हाउ वी एक्सप्लेन थिंग्स एंड व्हाट डू वी डू इन दीज क्लासेस, राइट. चलो गाइस, तो आज जो हमने किया इस पे अभी तक कोई डाउट किसी का? If there is any doubt, any query, anything you want to ask, please feel free to do that. I've given you 20 topics as homework. Choose any one out of these, right? You can take a screenshot right now. I'll also provide you the PDF of this along with the further material जो मैंने आपको, sorry, sample essays जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास बहुत सारे sample essays पड़े हैं. So I'll provide those to you in the lecture today, in the course today. So you can use that, but you have to at least start with one topic today. कोविड हो सकता है, यस प्रणव, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा पुराना हो गया ना. 21 22 के बाद 22 में हो चुका है, पिट चुका है टॉपिक. अभी तो वो बस ये बोल सकता है प्रणव कि अगर कोई एपिडेमिक आता है आगे से वर्ल्ड में, तो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट. मे बी ये हो सकता है कि आर वी रेडी फॉर फर्दर पेंडेमिक्स और फर्दर एंडेमिक्स इन द वर्ल्ड दैट आर गोइंग टू बी देयर. ये हो सकता है. इंडिया ने क्या किया वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है, फिर वो गवर्नमेंट वाली चीज आती है, गवर्नमेंट ने ये ड्राइव चलाई वो चलाई, तो उस पर थोड़ा सा ना वो दे ऑलवेज गिव यू थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल, थोड़ा सा बैलेंस टॉपिक देते हैं विच आर नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स एनी गवर्नमेंट. तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. डोंट वरी अबाउट इट शिवम. टारगेट ग्रामरली वाला छोड़ दो, उसका अज्यूम मत करना अपना, ठीक है. देयर हैज टू बी मैनुअल इवैल्यूएशन. ग्रामरली ओनली जजेस यू ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ योर grammar and the vocabulary that you've used, but the content can never be evaluated through Grammarly. तो उसके लिए human लगेगा ही लगेगा शिवम. So don't worry about it. Got it, Jayant? Can we have a negative view of government or should we? गवर्नमेंट का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ऋषभ. यू नेवर अप्रिशिएट, यू नेवर क्रिटिसाइज. ठीक है, आपको सिर्फ वहां पे जो प्लेन फैक्ट्स हैं वो मेंशन करने हैं. लेट द रीडर डिसाइड कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था. ठीक है, यू से कि गवर्नमेंट हैज अगर आप ये बोल दोगे कि इस फील्ड में देयर हैव नॉट बीन मेनी स्कीम्स और देयर हैव नॉट बीन मेनी स्टेप्स दैट हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द अथॉरिटीज, तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि यार वो गलत किया है गवर्नमेंट ने. अगर आप बोलोगे देयर हैव बीन मेनी स्टेप्स एंड मेनी स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड सच एज जनधन योजना, विकास योजना, कृषि विकास योजना, देन इट ऑब्वियसली इट सेज कि यार हाँ अच्छा काम किया है. यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली और एक्सप्लिसिटली मेंशन दिस कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया, गवर्नमेंट ने बुरा किया. योर गाइस प्लीज रिमेंबर, योर एम इज टू इन्फॉर्म द रीडर about the topic, not create or not let's say, what do you say, not inclined or not put bias into the reader's head. आपको अपना ओपिनियन नहीं डालना है रीडर के हेड में, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है. लेट द रीडर डिसाइड कि वो अच्छी थी या बुरी थी, ठीक किया या गलत किया. लेट हिम मेक हिज ओपिनियन. ठीक है, लेकिन यू डोंट डू दैट. इज दैट क्लियर टू यू ऋषभ? राजेश, नहीं यार, टीचर का काम पर्पस ही यही है ना यार राजेश यार. अदरवाइज आई वुड बी ऑफ नो हेल्प. ये पीपीटी में आपको वैसे भी दे सकता था आपके कोर्स के अंदर. बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस इंटरेक्शन? इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू नो और देयर इज समथिंग दैट आई हैव टू टेल यू, दैट कैन कम अक्रॉस, राइट, वाइस वर्सा. सिनेरियो नहीं, सिनेरियो बेस्ड नहीं बनाने चाहिए राहुल. ये मैंने बहुत जगह पे सुना है, बट ये बहुत पूरा. राहुल हैज अ वेरी गुड पॉइंट गाइस, कि इफ देयर इज एन एसे नैरेटिव बेस्ड, जैसे ये था कि पीस कैनॉट बी अचीव थ्रू कैनॉट बी अचीव थ्रू वॉर, इट कैन बी अचीव थ्रू अंडरस्टैंडिंग. इसमें हम नैरेटिव से शुरू कर सकते हैं, एक स्टोरी बना के कि लेट्स अज्यूम टू नेबरिंग कंट्रीज got independence after a long struggle. One of them focused on economic reforms and growth, and the other focused on restricted views and only bothered about fighting the neighboring country. It will always lead to a conflict, and finally you can say such a situation is not a prerogative to peace and harmony in the world. ऐसा बना के चलोगे, you're just putting a subjective point there, right? There are so many conflicts, there are so many issues in the world. It's not just कि neighboring countries ही हैं जो fight करती हैं. रशिया अमेरिका कितनी दूर है भाई, ठीक है. There has always been a cold war between them. China fighting with other countries. So that's would be irrelevant here, right? So instead of giving starting with a scenario, it's better to start with a with some logic in it. Some logic in it कि यार peace मतलब war हमेशा क्या देता है. We have seen so many wars, and the outcome has always been deaths and what do you say, costly let's say depreciation of the economies of the country. Let's put into example Germany. Both the world wars had a huge impact on Germany, right?
Germany, which was a very growing country or technologically very advanced at that moment, but due to the repercussions of world wars, right, it had to pay the it had to pay the countries that won. So start with something realistic. List of verticals, Rishabh. Guys, list of verticals देखने क्या क्या हो सकता है list of verticals. Okay. Yes. So यहाँ देखते हैं guys. अगर मैं देखो, first I want to classify your verticals into this economic and social issues. तो पहले economic and social issues में से भी हम economic को अलग कर लेते हैं, ठीक है? Let's start with social issues. Then second vertical could be economic issues, right? Third could be based on current affairs. I don't mean current affairs by के सर कल जो हुआ है, मोदी जी पेरिस गए हैं, उनका बड़ा वेलकम हुआ है, ये करंट अफेयर्स नहीं. व्हाट आई मीन बाय करंट अफेयर्स इज कि इंडिया हैज started developing its indigenous for example defense equipment, right? Example of INS Vikrant and many what do you call them, many missiles, ICBMs and BrahMos and whatnot, and we have also started exporting them recently. So उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि यार के is investment in defense sector good or bad for the country. अब ये आ सकता है argumentative. अगर आप लेफ्टिस्ट अप्रोच से सोचो तो इट इज बैड, राइटिस्ट अप्रोच से सोचो इट इज गुड, राइट? अब क्या आप क्या अप्रोच लोगे? अ वेरी डिप्लोमेटिक सेंट्रिस्ट अप्रोच कि कितना इन्वेस्टमेंट है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके आउटकम क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है, वो डिस्कस करके जाओ. ओपिनियन छोड़ दो पढ़ने वाले पे. You have to inform the reader. So current affairs being another vertical, then static topics can be another vertical, right? And then what else? What else? What else? Finance and management, right? Assuming it's RBI exam, तो इसको हम लेके चल रहे हैं कि finance and management can be another vertical in this. Now, then there will be subcategories. Under social, there can be many other sub verticals like health, education. What else? Poverty, employment, right? What else, guys? Climate change, environment. You can put it under environment. That includes everything, मतलब global warming, ये सब वो सब सारा आ गया. So I think this can be that. Now economic के अंदर I think you would be the better judge, guys, because I have not studied. I'm a non-commerce student. I'm a non-medical student, so I think you would be a better person to tell me कि economy के अंदर क्या क्या आना चाहिए. I think GDP growth ये सब तो आना ही चाहिए. GDP and growth of the country, growth rate and the everything that. What about startup ecosystem and MSMEs? Startups and MSMEs. This should be discussed under this. What else under economy? Sharing the burden of different sectors. For example, unproductive. For example, usually it is said in a growth story of a country, it starts with agriculture, then moves to manufacturing, and then it transits into services sector. But what India did was, from agriculture, we straight away jumped to services. The in-between sector, manufacturing, was not paid a lot of attention, right? So that could also be discussed in different ways in the context of economy, right? LPG reforms, the reforms that have been made, the banking sector, how it fares, how is it going in the world, in the country, 5 trillion economy, inflation, economic reforms, gender equality. Yes, gender equality can be under social. Very good, Manu. Yes, Surabhi. So these are your economy. Then similarly, current affairs, right? What has been going on recently? Recently, abhi kya kya important hua hai? Is there any watershed moment that we have observed? Obviously, इसमें तो देखा ही है हमने. फॉरेन पॉलिसी में देखा है हमने, अपनी डिफेंस में देखा है, स्पेस में देखा है, आई थिंक डिजिटलाइजेशन में देखा है हमने, टेक्नोलॉजी में देखा है हमने बहुत सारा, इंटरनेट एंड ऑनलाइन, इस सब में जो ई गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं, ये सब हमने देखा है. दिस इज ऑल्सो अंडर करंट अफेयर्स. देन इज ए स्टैटिक एंड FM. आई थिंक यू आर द बेटर जज फॉर दिस. ठीक है. तो गाइस, बिफोर आई एंड टुडेज सेशन, ठीक है, आई लाइक टू गिव यू के सर बच्चे का पूछने से सोर्सेज क्या होने चाहिए. फर्स्ट सोर्स इज शुड बी योर फॉडर मटेरियल. अगर आपको कोई चीज फॉडर मटेरियल से नहीं मिलती है,
then you should go to Wikipedia or you can use Google, but reliable sources. ठीक है, कोई भी नहीं कि XYZ कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो. Relevant sources like Wikipedia and PIB, PBS. So fodder material and Wikipedia or PIB or PBS for your research and study. Then what should you do on a daily basis? At least read one editorial based on ESI topics from either the Hindu or the Economic Times, and then read one financial topic from either the Economic Times or the Business Standard. तो आपको दो editorials रोज पढ़ने हैं गाइस आज से. एक ESI टॉपिक पे बेस देखो, पॉलिटिकल टॉपिक सारे छोड़ देना. 2024 में इलेक्शन आ रहा है, सब बकवास है, यहाँ से कोई रिलेटेड नहीं है. आप में क्या हुआ, गवर्नमेंट में क्या हुआ, बीजेपी में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, ठीक है, राहुल क्या है, मोदी क्या है, केजरीवाल क्या है, forget all that. Only focus on topics that are based on ESI or on your finance and management. So every day you have to read 2 editorials. Now this will help you in many ways, guys. पता है क्यों बोल रहा हूं मैं सर? ऐसे के लिए नहीं, for your whole descriptive English paper. Your comprehension skills will improve, which will be required in your Pressy passage and reading comprehension passage. Your reading speed will improve. Your vocabulary will improve because you will come across new words on a daily basis, right? You will get catchy phrases for your opening. आप ये observe करना कि यार जब कोई author open करता है अपने editorial को, तो कैसे open कर रहा है वो, क्या punchy phrases use कर रहा है, जैसे need of the hour, yeah, this is this is a high time, yeah, to unleash the animal spirits of the country, yeah, of the economy, right? तो ऐसे ऐसे phrases कहाँ से मिलेंगे आपको? एडिटोरियल से. तो वो चीजें पिकअप करोगे तो यू रीडिंग स्पीड, रीडिंग स्किल्स, एनालिटिकल पावर, वोकैबुलरी, योर introductory phrases or punchy phrases you'll get from there. And last but not the least, your presentation skills will improve. How to present something without adding any bias into it. That is what you will get from these editorials. So from today onwards, your daily homework is read 2 editorials, and I'll ask you in every class, what did you read today or what did you read yesterday? So 2 editorials on a daily basis. Along with that, you need to cover your fodder material. You need to start covering your verticals, you need to start covering your topics. And what I mean by covering your verticals is start collecting facts and data, statistics, reports, schemes on a particular issue and then retain it. So that is what is required. So next 20 days, forget about phase 1, forget what you did before this. Focus on what is lying ahead. Yes, it is, Rahul. Absolutely, it is there. The Hindu always comes out with one, good editorial. See, Pranav, it will not give you edge if you choose a factual, a topic which is based on economy or finance. It will only give you edge if you execute it well. आपने अच्छा टॉपिक चूज किया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, व्हाट इज द पॉइंट? और आपने मे बी नॉर्मल टॉपिक चूज किया लेकिन एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया, it will fetch you more marks. So guys, it's all about what you write and how you write. It's not about the topic. मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपिक ये अच्छा है या ये बुरा है, सभी टॉपिक को बराबर मार्क्स मिलते हैं, right? The whole game, the whole thing is depends upon how you execute your topic. अगर पॉइंट ये है कि अगर आप इकोनॉमिक और फाइनेंस टॉपिक चूज कर रहे हो तो इट शुड बी बैक्ड अप बाय थीसिस, स्टैट्स, डेटा. अगर आप स्टैटिक टॉपिक चूज कर रहे हो तो इट शुड बी it should be emotion evoking. It should be, when somebody reads it, he should feel that inside his heart that okay, this has changed me, I've learned something, a different context for this. So choose topic according to your comfortability, Pranav. कि जो टॉपिक है उनमें से मुझे क्या लग रहा है कि अगर मैं इसमें डेटा फैक्ट मुझे पता है तो I'll choose this because I'll be able to do it, able to do it easily, I'll be able to execute it well. But अगर आपको लग रहा है कि बाकी टॉपिक्स में मुझे लग रहा है कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, then obviously you'll have to go for the static topic. झूठ तो नहीं लिख के आओगे ना कि फाइनेंशियल टॉपिक फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर लिख दिया, लिखना शुरू कर दिया, मुझे आता भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, मैं क्या लिखूंगा वहां पे, गलत ही लिखूंगा ना. So we can't do that. So that was the point of choosing a topic wisely. AI को MyTab, AI को just download any chatbot, AI chatbot बहुत सारे ऑनलाइन है, मोबाइल पे भी होते हैं, कंप्यूटर पे भी होते हैं. तो you can use any chatbot, find out a topic, put it on the chatbot and just ask it to write a 400 word essay on this. ठीक है? अब ये भी लिख सकते हो यूजिंग फैक्ट्स एंड डेटा एंड स्कीम्स और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वो अलग चीजें आप डाल सकते हो. एंड देन यू कैन रीड दैट एसे रिटन बाय एआई. Then you can see, oh, this is the type of essay I have to present in my paper. So once you do that 4, 5, 6 times, right, that is when you will realize and you will understand, okay, now I'm getting to the habit of understanding that this is the type of presentation I need to put in my exam. So that is how you use AI. AI is like your best friend right now. Not best friend, maybe your smartest friend right now.
कि यार वो जो टॉपर जो फ्रेंड होता है ना जिसके पास सब जाते हैं नोट्स मांगने के लिए, दैट इज एआई टुडे। कि यार तू अपने नोट्स दे दे, तेरे नोट से सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे, दैट इज एआई टुडे। AI is doing it for you. AI is basically, it is collecting, the best possible presentation and the stats and facts for you, and then giving it for you. So he's your best and the smartest friend out there. So you use it as your best buddy कि यार तू बता भाई क्या आना चाहिए यहाँ पर, right? वो आपको बताएगा, उसको पढ़ कर, अरे यार बड़ा सही था ये तो, next time you'll get into the habit of doing this. Got it? My tab. अगर आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा बाय चांस गाइस, करने से अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, जैसे आपने बोला 17% था, एक्चुअली 17.5, तो अप्रोक्सीमेट लिख दो। ठीक है, यू कैन यूज अप्रोक्सीमेशन, इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि झूठा डेटा बना देना है। अप्रोक्सीमेटली 3/4 बना दिया, 2/3 बना दिया, था वो कुछ भी नहीं। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू दैट। ठीक है, यार ये युवराज ने वो वाली बात कर दी, सारी महाभारत खत्म होके ये सीता किसका गधा था। क्या बात कर रहे हो यार युवराज। मैं सारे सारे सेशन में मैं यही बोलता आ रहा हूँ कि essay is always written in paragraphs. We do not use pointers, titles, subtitle in an essay. Essay is congruent flow of ideas, युवराज। So what are you लेट आए थे युवराज आप? अच्छा बीच में चले गए थे, हाँ। हेलो सोना, हेलो बाबू आ गया था बीच में। खाना खाया क्या, है ना? नहीं वो तो नहीं आया होगा ना अभी, तो शुक्र है। तो युवराज, yes, we do not use pointers, bullet points, numbers, titles, subtitles in an essay. Essay is only written in paragraphs. I'm just kidding, but please remember this because this is important, because marks will be deducted, guys. ये याद रखना। अगर आपको लग रहा है कि सर इससे कुछ नहीं होता, marks will be deducted and they are deducted every year. ठीक है, unless you follow the format. The format is very very important, guys. चलो गाइस, तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ठीक है, विल कंटिन्यू दिस टुमारो। ये मैंने आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे थे कि यू कैन, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन, यू कैन आल्सो लुक इनटू दीस 4 टॉपिक्स: ई रूपी, इंडियाज डिजिटल करेंसी, इन्विजनिंग इंडिया 2047, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, एंड यूपीआई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो यू कैन आल्सो स्टार्ट विद, प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करें, इनसे शुरू करो गाइस। एआई को बोलो ये ऐसे लिखें आपके लिए, उसको पढ़ो एंड ट्राई टू इनकलकेट दैट इन योर day to day practice and day to day preparation for descriptive English. So guys, let's wrap up the session for today. Tomorrow we will practice live essay writing, and we will also cover up the 10 most important tips and tricks for your essay writing. What do you really need for to get the cutting edge, the last mile? What do you need to really stand out? That we will discuss tomorrow, and we'll practice live essays tomorrow. And before we end the session, again, guys, you can enroll in our live crash course, which includes all the live classes for FM, ESI, and current affairs. There's a test series also included in it, which includes 5 full-length mock tests with evaluation of test on the interface of the exam. And there is a standalone test series as well. You can also avail that, and you can get benefited from this. So, guys, we are offering, and today is the last day, we are offering flat 50% discount on this. The link has been given in the description of the video on our YouTube channel. So you can go watch it, and you can go check it out, and you can get benefited from this, right? All right, guys, any doubts, any queries? Surbhi, you don't have to thank me today. Please, you can thank me on the day you crack this exam and you become an RBI Grade B officer. I'll not take your thank you today. All of you, I'll take your thank you on that day. Okay? So this is a journey that we have to undertake together, right? And let's dwell on each other. Let's trust each other. Let's give each other ample respect कि अगर सर ने बोला कि ये लिखना है होमवर्क तो करना है, अगर आपने मुझसे कुछ पूछा तो I'll give my best to help you out. ठीक है, तो let's take that, let's have that respect for each other, and I'm sure this will at the end of the day prove beneficial and fruitful for your journey ahead. I can guarantee you that. But thank you उस दिन लूंगा जिस दिन आपका poster Hall of Fame में होगा. You'll become an RBI Grade B officer with a smile and on your face and proud feeling inside your heart. That day I'll be more than happy. I'll take your thank you and we'll celebrate it together. Okay? But till then, no complacency, no sitting back and relaxing. It's all about your, it's all about your future, what we are going to do. Okay? So chalo guys, that is it for today. I'll see you again tomorrow, 10 a.m. Do not miss the lecture because it is going to be very, very helpful tomorrow. So keep up the good work.
Guys, keep on working hard. Stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you guys. Only one essay today, my time. Only one essay for today. Rest, we'll learn tomorrow and we'll start doing it from tomorrow onwards. Okay, guys? So thank you so much for your time. And all my well wishes, all my blessings are with you. Give it your best, and I'm sure you will come out with flying colors. Okay, I know this. It's not that I believe this, I know this. So just trust your instincts, trust your potential. Your hard work will pay off at the end of the day. Uh, what consumption? Sure. Repeat the opening line regarding consumption. Acha, voila. Education is the most valuable consumption and good that there is, immeasurably enriching the lives of those it touches. Okay, I'll give it in writing to you tomorrow. ठीक है शिवम, डोंट वरी. बट मेरा क्या करना है, कॉपी क्यों कर रहे हो? नया कुछ नया बनाओ ना यार. बी इनोवेटिव इन योर लैंग्वेज. चलो, थैंक यू सो मच गाइस. आई सी यू अगेन टुमारो. थोड़ा लेट भी हो गया बट इट्स ओके, विल मैनेज. ठीक है, तो आई सी यू अगेन टुमारो 10 AM. डोंट बी लेट and we'll learn something very, very crucial tomorrow. So till then guys, see you. All the very best and keep on working.